वेलकम रेहान भाई, वेलकम। कैसे हो? वेलकम। वेलकम शाम, वेलकम। लव फ्रॉम बांग्लादेश। हे, हेलो माय नेबर। आज डीपीएस दिखाओगे ना? हाँ, कर लेंगे टेस्ट। नाविया का। हाँ। कैसे हो आप? मैं बढ़िया। ओए, मैंने स्क्रीन ठीक नहीं किया, लॉल। लूनर टीम का, हाँ। बनना दिया लूनर टीम खेलूं तो। पहले तो मेरा। वैसे नाविया के टीम में इलुआ का पता नहीं ज्यादा कुछ काम होता है कि नहीं। दोनों सिल्कन मून पे है। वेलकम डार्कनेट। मीको का वेपन टीयर लिस्ट आ गया। बताओ थोड़ा। नाविया को ईएम का काम तो है नहीं, इसको इंस्ट्रक्टर देने का कोई फायदा है नहीं। DM। Echoes of the Heart। इसमें नेवी का वेपन नहीं है लिस्ट में। Echoes of the Heart 2 बार क्यों है? 50% ऑफ टाइम, 100% ऑफ टाइम है। It's a third भाई। वेलकम निशान भाई। कैसा है भाई? मैं बढ़िया। कल शाम शाम के बाद मैंने तुम्हारा टेरिस कर दिया था। कोलंबिया के पास इनेफा और प्रिंस होगा और ओरेट। न्यू टीम। कोलंबिया है मेरे पास। इनेफा और प्रिंस बेस्ट होगा या फिर ओडेट या न्यू टीम। अभी अभी तो न्यू टीम ही ज्यादा अच्छा रहेगा देखा जाए तो। गेंशिन में ऐसा ही होता है कि ओल्ड टीम के साथ बहुत बुरा होता है। ये बॉस बनाए थे ही ऐसे है। स्टीजन बोलो, एबिस बोलो, न्यू टीम हमेशा काम आता है। सीजर एडवांस करके 72 to 40 कैसा है? ठीक है। नेफर सिग्नेचर बेस्ट है। अगर मैं कहीं नेफर एंड मी को एक साथ खेलूं तो दिक्कत होगा ना।
कोई ना। थैंक्स। वेलकम। वेलकम कुरुमी। वेलकम दी। वेलकम अभिरावत। मेरी ऑडिट देखना, रुको जरा। इस पे मैं लगा देता हूँ एप्यूट। ये रिडीम मेरे कान में बंद क्यों नहीं हो रहा? अरे, तुम लोग को भी सुनाई दे रहा है क्या? आई थिंक नहीं। तो नहीं करना था बैगन। और एट 99 184 ओवर क्रिट है तुम्हारा। क्रिट क्रिट कम कर दो। मेरे कान में कंटिन्यू शिंचन वाला रिडीम बज रहा है। कुछ और, कुछ भी और रिडीम करना जरा। आई थिंक ग्लिच हो गया मेरा। एलियोशो 2.5 अटैक पर कितना हील करेगी? एलियोश, या मैंने एलियोशो बिल्ड नहीं किया। एलियोशो पे न्यू सपोर्ट सेट यूज करूं तो ऑडिट पे क्या चलेगा? तुम जिस टीम में खेलोगे उसका डीपीएस वाला सेट। स्टेला कंडक्ट खेलते हो तो डीप शैडो एंड वही तो खेलोगे ना एलियोशो के साथ। ये एक्चुअली ब्लूटूथ हेडफोन लगा के जब स्ट्रीम करता हूँ ना तो रिडीम का साउंड आता ही नहीं है। मुझे सुनाई देता है, स्ट्रीम में नहीं जाता। ये ब्लूटूथ हेडफोन का एक डाउन साइड है। गेम का साउंड कम। ओ माय बैड, गेम का साउंड आएगा कैसे? मैंने तो चालू ही नहीं किया था। यार रेहान भाई, मुझे हिंदी पढ़ने में 2 साल लगेंगे यार। क्या जरूरत थी? मैं क्या, इंग्लिश में लिखो।
मिनट पर 270 यार बहुत अच्छा है। 250 एरे फ्लैश में मैं तो 250 एरे फ्लैश यूज करता। एंड फिर से ये सीआईडी वाला साउंड मेरे कान में बज रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ ना। वेलकम ईफा। अरे यान भाई, तुम हिंदी मत लिखो, इंग्लिश लिखो। हिंदी पढ़ने में मुझे 10 गुना टाइम लगता है। मैं मेटा को फॉलो करने के बजाय एक मजबूत डीपीएस सेटअप बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। इससे भले ही किसी बॉस को हराने में थोड़ी मुश्किल हो, फिर भी मैं काम पूरा कर पाऊंगा। आई सपोर्ट यू रेहान भाई। वैसे लूना टीम इतने आउट ऑफ मेटा भी गए नहीं, वो तो काम हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। आपका ऑडिट बिल्ड रुक देख रहा हूँ। डार्क नाइट रुको जरा, मैं इस एक छोटा सा डैमेज टेस्ट करना था, तो वही सोच रहा हूँ कि लाइक टीम होगा नाविया, इलुआ, गोरो एंड कोलम्बिना, ये है टीम। तो मैं सोच रहा था आर्टिफैक्ट क्या दूं इन दोनों को। इस पे 2 पीसीएम दे देता हूँ। इसका टीम बना, टीम नहीं लाइक जस्ट उस ये करके देखता हूँ मैं तुम्हारा। इलुआ क्यू लाइक रिक्वेस्ट यही है इसीलिए। एक काम करे, दोनों पे सिलिकन मून ही रहने देते हैं। जितने डीपीएस आएगा उससे 5-10 हजार ज्यादा काउंट कर लेंगे। 73, 200। लेवल 80 पे तो स्किल 8 लेवल तक चला जाता है यार, क्या कर रहे हो। थोड़ा टैलेंट भी फार्म कर लो, आर्टिफैक्ट तो मिलते रहेंगे। मुझे ओरेट का सीआर वाला पीस ज्यादा मिल रहा। अच्छा तो है, क्रिट चाहिए तो है उसको। ओरेट को दे दो 2000 क्रिट डैमेज। लव यू ब्रो। ये फिर से हिंदी लिखता है। ओह। पढ़ते हैं थोड़ा। बेहतर होगा अगर आप कुछ आखिरी आखिरी सुझाव दे। ओके, अभी रावत वाला पढ़ लेते हैं। क्या मुझे मेटा को फॉलो करना चाहिए या फ्लिंस टीम बनानी चाहिए? फ्लिंस टीम अच्छी है, लाइक ज्यादातर बॉस पे काम आ जाता है। तो फ्लिंस
टीम लाइक क्या तुम इनेफा एंड प्रिंस दोनों को निकाल पाओगे इसी पैच? वेलकम एम फ्रेंजियद, वेलकम। लीवाई ब्रो थैंक्स। ये लीवाई चैट में कहा है? हेलो है? कौन लीवाई? किधर है लीवाई? ब्रो थैंक्स फॉर सजेशन। ये छुप छुप के सजेशन दे रहे, मुझे तो नहीं पता व्हाट। छुपा हुआ कैरेक्टर व्यूअर जो उसी को दिख रहा है। वेलकम शेल्टन। अच्छा लव यू ब्रो लिख रहा होगा, लव यू को लीवाई बोल। अच्छा लावी, अच्छा उसने लिखा भी लावी, मैंने उसको पढ़ा लीवाई। ओ माय गॉड, एनीमे देखना कम करना पड़ेगा। मास्टर इंडिया स्पॉटेड इन चैट, मिस्टर इंडिया स्पॉटेड। मैंने तो स्पेलिंग भी मिस्टेक किया ना, वो भी तो। ओहो। Fratnik, reporting for duty. You got this! Behold the dawn! Everyone on me! Umbrella warfare, I guess. Feeling lucky? Attack! That's the way. A moonlit night for all. While the light shines bright, be gone! Fall in! Umbrella warfare, I guess. Hiya! Ha! Press the advantage! This one's got your name on it. Attack! थोड़ी एनर्जी की कमी हो रही है इस टीम में ना। A new moon rises. You got this! Behold the dawn! Charge! Hey there! Umbrella warfare, I guess. Attack! तो शोहम भाई तुम मान के चलो 75 के, 75 के मान के चलो। इस टीम लाइक दोनों पे सिल्कन मून है, तो क्या पता इल्लुआ पे 2 पीसीएम होने पे कोलोमिना का डैमेज थोड़ा इंक्रीज होता, तो 80 के भी मान सकते हो। लेनिया कहाँ है? लाइक ये रिक्वेस्टेड टीम था कि इसी टीम का डीपीएस। स्कर्क एंड सैंडो ने रिव्यू कर दो, अपग्रेड हुआ है बिल्ड। एक बार कोरक निकाल के लिनिया यूज करो। नहीं वो बात नहीं, लाइक जस्ट टेस्ट करना था ये। अगर लिनिया को ऐड करूँ लाइक ये टीम 100, मैंने लास्ट एक बार टेस्ट किया था 120 के गया था ऐसे कुछ। वेस्टर्न वेपन इज वेरी गुड। उसके पास लिनिया नहीं होगा ना, इसलिए लाइक यही वाला टीम यूज करने के लिए बोला होगा। कोलोमिना पे एब्यूट ही था वैसे। गोरो एंड इलियो उन दोनों पे सिल्कर मून था, क्योंकि सेट था नहीं मेरे पास लगाने के लिए। सर इससे डीपीएस लग रही। बढ़िया। वेस्टर्न का वेपन यूनिवर्सल है क्या? मुझे पता नहीं, नो आइडिया।
देखा नहीं। इलियो सीसी क्या ओनली जीपाई को सीआरसीटी का बफ देता है? नहीं, पूरे लाइक टीम में जो भी लूनर वाला डैमेज करते होंगे उन सब का करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। लाइक मान लो जैसे कोलंबिना भी तो लूनर क्रिस्टलाइज डैमेज देती है ऑफ फील्ड, उसका भी करेक्टर इंक्रीज हो जाता है 10%। लाइक स्पेसिफिकली लूनर वाले डैमेज का। अरे धन्यवाद योर फ्रेंड 2 ज्वेल्स भेजने के लिए। चेंजेस तो कुछ किया नहीं था बहुत ज्यादा। अरे धन्यवाद फॉर 350 ज्वेल्स। धन्यवाद धन्यवाद योर फ्रेंड, धन्यवाद। पेंशन गिरी है क्या तुम्हें फ्रेंड, योर फ्रेंड भाई? 42 something crit damage plus ER plus Stellar Swirl. I don't know if they cycle or remain active after skill. फोटो ढूंढना पड़ेगा उसके वेपन का। क्या बोला था इसने? स्कर्क एंड कौन? सैंक्रोने। वेलकम शौकत भाई, वेलकम। अभिरावत देखा क्यों? लाइक मैंने बोला था लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन आज मैं लाइव में अगर बंद रखता, लॉस हो जाता। $70 to $49। इसके पहले वाला बिल्ड ज्यादा अच्छा नहीं था? उसमें ओवर क्रिट वाला नहीं था, उसमें तो 250 प्लस क्रिट डैमेज था आई थिंक। 65 समथिंग क्रिट, वो वाला ज्यादा अच्छा नहीं है? प्लस .8 मार लिया। मैं होता तो वो ओल्ड वाला बिल्ड रखता शर्ट। 65 to 60, हाँ वो वाला तो मैं तो वही रखता 65 to 60। मोबाइल में शॉर्ट स्ट्रीम क्यों दिखा रहा है? मोबाइल में शॉर्ट स्ट्रीम क्यों दिखा रहा है? व्हाट? वेट से क्या मेरा डुअल स्ट्रीम ऑन था क्या? नहीं तो सिंगल स्ट्रीम हो रहा है, डुअल स्ट्रीम तो बंद है। शॉर्ट्स में स्ट्रीम चल रहा है, पीसी में शॉर्ट्स में, मेरा स्ट्रीम शॉर्ट्स में चल रहा है। व्हाट? चमत्कार। पीसी में ठीक है, कैसे चल सकता है मेरा स्ट्रीम शॉर्ट्स में? मैंने शॉर्ट्स में चालू किया ही नहीं। वो दिखाता है क्या बात कर? स्क्रीनशॉट भेजना है फोन से। डीएम देखो। शायद तेरी कहाँ है डीएम?
नहीं भेजा कि नहीं भेजा, नहीं इसने। आप ही भेजा है। अरे बाप रे। ए, ये कैसे पॉसिबल है? आ, यार ये तो तब होता है ना जब मैं डुअल स्ट्रीम को एनेबल रखूं। वो तो बंद था। टीम जीरो था ओल्ड बिल्ड का। कितना ही इंक्रीज हुआ है? 40। ऑटो होता है। अरे बट ये तो डुअल स्ट्रीम चालू करने पे होता है ना, ये जो बंद है। लाइक ये ऑटोमेटिक थोड़ी होना चाहिए। डुअल स्ट्रीम अलग है। डुअल स्ट्रीम पर तुम्हारा स्ट्रीम टॉप होके दिखाता है। ओह, अच्छा ये अलग होता है देन। है। What the fuck man? हाँ ये तो, ये नॉर्मल है आई थिंक। What the fuck man? अह, अच्छा, सही है। डार्कनेट देखो तो उस शॉर्ट्स वाले स्ट्रीम से सुपर चैट होता है कि नहीं, देखा ना जरा। वेलकम फ्लेयर, वेलकम। क्या हुआ? कुछ नहीं यार। अगर कोई शॉर्ट्स पे क्लिक क्लिक करेगा तो वो तुम्हारे स्ट्रीम पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। किसका अकाउंट है ये? मेरा अकाउंट है। सुपर चैट दिखा रहा है पर वो ज्वेल वाला नहीं दिखा रहा। अच्छा सुपर चैट दिखा रहा है। करके देखना जरा कि एक्शन में होता है कि नहीं। कभी कभी वो फेक बटन भी होता है। ओल्ड बिल्ड बेटर आई गेस। मैं होता तो ओल्ड ही खेल लेता। तेरे पास तो नहीं है हाँ लाइक। अच्छा मैंने अपना अकाउंट बोला क्या ये? पैसे नहीं है? अरे यार। अरे पैसे हाथ का मैल है यार। नहाने के पहले स्ट्रीम पे आया करो। 8232 तो अच्छा है। मैं बहुत गोरा हूँ। हैं? क्या मतलब डार्क नाइट ने हमें, हमारे साथ रेसिज्म किया इसने? मैंने आपका डीएम कल देखा नहीं। और कोई ना कोई ना, मैं डीएम करके 3-4 मिनट वेट किया कि क्या रिप्लाई आता है। अगर कुछ और रिप्लाई आता, लाइक कुछ और फार्म करना होता तो मैं कर देता। 3-4 मिनट वेट किया, देखा रिप्लाई नहीं है तो जो लास्ट टाइम फार्म था वही कर दिया। एक भी अपग्रेड नहीं मिला ऑडिट का। कोई ना यार। क्या करोगे अपग्रेड लेके? टैलेंट तो 8 पे ही छोड़ना है तुम्हें। मैं भी बहुत गोरा हूँ। फोटो भेजो देन मानूंगा। अटैक कुछ ज्यादा कम नहीं है तुम्हारा शर्ट का? 2000 भी नहीं हो पा रहा। कोई ना। डार्कनेट मैंने तुम्हारा ऑडिट देख तो लिया एक बार। कहाँ था ये? अगर मैं याद करूँ तुम्हारे ऑडिट पे स्कर्क का तेरी ऑडिट पे मिस पीटर लगा था। 199 क्रिट डैमेज था। बोलो कब देखा मैंने? क्या फायदा गोरा होके, सामान तो काला ही है। मुझे भी शॉर्ट्स में स्ट्रीम देखनी है। कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो आज पता चला कि
शॉर्ट्स पे भी अलग से स्ट्रीम दिखाता है। वेलकम शोमदीप, वेलकम। ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है ना इस ट्रेन के अंदर, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। शार्लिन तुम लड़की हो? आज तो भी तुमने सच बात बोली। वो तो वॉइस चेंज यूज करके वो करता था, इसीलिए तो फेस कैम नहीं करता, कभी फोटो नहीं दिखाया। इसका सच बाहर आ गया। वेलकम टेम्पेस्ट, वेलकम। कैसे हो? मैं बढ़िया। ओरिट, बताओ गॉबलेट पे 4 रोल गारंटी रिरोल करूं? यार अभी न्यू कैरेक्टर पे, न्यू आर्टिफैक्ट पे अभी इतने सारे एलिक्सर यूज कर दोगे? क्या पता मिल जाए आर्टिफैक्ट। थोड़ा तो सब्र कर लो। ये ऑडिट C2 क्यों है? डायर हुआ नहीं मेरा तो ना, नहीं हो पाया। हम्म, मेरा लक तो खराब है। एंड बाय द वेलकम मीको इम्पैक्ट, वेलकम। थोड़ा और फार्म कर लो, क्या पता मिल जाए। क्रिकेट को ज्यादा कम नहीं। मान लो अगर तुम्हारे पास सैंड ऑन पीस अच्छा आ जाए तो तुम ऑफ पीस गॉबलेट लगा सकते हो, है ना? थोड़ा और वेट कर लो। अभी अभी मत करो क्राफ्ट, आई मीन रीशेप। सेकंड वाला बॉस मावी कैसे कर दो? हाँ। तो बट मैं क्यों करूँ टेम्पेस्ट, तुम बताओ। मेंबर्स के लिए एक बॉस फ्री होता है, मैंने कर दिया तुम्हारा, तो तुम फिर से दूसरा बॉस क्यों बोल रहे हो? ग्रैंड पर लोकल लेजेंड आ रहा नेक्स्ट पार्टी स्टीजन में, डायर में 30 मिलियन एचपी। आई थिंक एचपी ज्यादा होगा तो वो सेल्फ डैमेज भी ज्यादा खाता होगा, हो सकता है ऐसा कुछ। लाइक कुछ स्टन बन करके बहुत सारा डैमेज खाता होगा, हो सकता है। C6 एलियोशा पे अटैक का क्या काम है? C6 एलियोशा आई थिंक हील का काम आता होगा ना, ज्यादा अटैक पे ज्यादा हील करता सुना था। लाइक कुछ चीज तो है नहीं उस पे बिल्ड करने के लिए, तो अटैक ही करते होंगे। अर्ले से ज्यादा टाइम लगा, मॉवी कैसे कम टाइम में हो जाएगा? कैसे हो सकता है मॉवी कैसे कम टाइम में? तुम्हारे आर्ले एंड मावी का दोनों पे कौन सा वेपन है? तुम्हारा एलियोशा कौन सा? मेरा C3 है। थर्ड बॉस सेल्फ डैमेज खाता है, ग्रैंड पर नहीं। 30 मिलियन एचपी एंड वो सेल्फ डैमेज नहीं खाता? क्या बात कर रहे हो? नोब्लेस दे दो। हाँ नोब्लेस ही देते हैं वैसे एलियोशा को। इस पे थोड़ा क्रिट रेट, सर्कुलेट क्रिट रेट लगाया जा सकता है। अभी भी आई थिंक नॉर्मल फार्म करता रहो ये वाला बेल्टेड फार्म भाई, क्या पता सैंड मिल जाए, ऑफ पीस गॉर्बेट मिल जाए। सर्कुलेट पे आई थिंक क्रिट रेट लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। 70 प्लस क्रिट रेट तो देना चाहिए इसको, 70 के आसपास। कोडेट रिव्यू प्लीज, आईडी भेज दो। एंड वेलकम एक्स श्रे, वेलकम। ये नाम बड़ा सेक्सी नहीं है? एक्स श्रे। एफर डोमेन इतना फार्म कर लिया कि फ्लिंक्स फिल किया तो टॉप 100% श्योर। माविका पर सिग्नेचर अर्ले बिल्ड नहीं अच्छे से। मैंने पिछले दिन किसी के अकाउंट पे एक ग्रेवस्टोन माविका से वो वाला बॉस मार रहा था, तो ग्रेवस्टोन माविका से वाइट टेसल आर्ले ज्यादा डैमेज दिया था, फास्ट क्लियर किया था।
आरडे पे जेट स्पेयर 87 177। जेट स्पेयर अच्छा तो मैंने भी जेट स्पेयर से ही मारा था। हाँ मैं यहाँ पे मावे का 2%। आई थिंक तुम आरडे से ठीक से खेल नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है तुम भेजो यार आईडी, ये जब तक इसका बॉस नहीं मारूंगा तब तक डीएम करता रहेगा मुझे। क्या एक बार इसका टीम से फर्स्ट बॉस का रोटेशन दिखा सकते हो? मैंने यार अभी याद आया, मैंने तो स्टीजियन का वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट भी करके छोड़ के रखा, अपलोड करना भूल ही गया, शिट। कैसे तूने 76 सेकंड किया? रुको रुको रुको, मैं तुम्हें वीडियो दिखा देता हूँ एंड उसमें आई थिंक 80 सेकंड क्लियर था। वही वाला लाइक थोड़ा लक अच्छा था तो 76 हो गया था, मैं वो दिखा देता हूँ तुम्हें। R5 फुल फ्लैंग, 5,000 रुपए का वेपन, 6-7, ओ माय गॉड, 1,000 प्लस डिफेंस, ऑलमोस्ट 1100, 19% अटैक सही है। 19% डिफेंस, ये दोनों पीस मिलके एकदम 1,000 प्लस। ठीक है, बिल्ड बिल्ड ठीक तो है। इसका पैसिव मुझे पता नहीं रहता, लाइक डैमेज डेल्ट बाय विंटर स्किल एंड बर्स्ट इंक्रीज बाय 32%। डैम, अच्छा अच्छा अच्छा, काश ये डिफेंस थोड़ा कम दिख जाता, मजे आ जाता। इसको तो रीशेप भी कर सकते हैं, आई थिंक 4 लाइनर भी है। फॉर्म करने के बाद भी मुझे दोनों फॉर्म करने के बाद भी मुझे दोनों भी नहीं मिलते। अम, क्या? मैंने देखा मिजुकी 140 के डीपीएस कर रही है C2 पर एंड 66 के, और अभी ट्रैवलर के फुल कॉन्स और रिफाइनमेंट नहीं आए। मैंने तो मिजुकी टेस्ट किया था, लाइक 105 के डीपीएस आया था। रुको रुको रुको, मैं पहले ये दिखा देता हूँ, रुको रुको, लॉगिन से पहले मेरा गैलरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे होगा ये, नहीं। Let me scry. Annihilate. रुको रुको, एक काम करता है, इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। देख रहे हो स्लेयर भाई, ये देख लो। Let me scry. Annihilate. A little amuse-bouche. अपने फेवरेट वेपन से 145 के। Fearless. Goose on the loose. Fate is upon me. Into the void. Yeah.
वेलकम मिल्कू। Strike a pose. Time to shine. Fearless. A burst of flavor. Decided by destiny. Paradigm shift. Extinguish. Ha. Ha. लाइक ये जैसे 75-6 पे थोड़ा दूर चला गया ना, तो उस टाइम पे मर गया था और कुछ नहीं। मे बी क्रिट ठीक ठाक लगे होंगे, यही था। यहाँ पे थोड़ा सा बच गया, वहां पे मर गया था। बस दिखाने के लिए तो ठीक है। टेम्पेस्ट को लॉग इन करता हूँ। ट्रैवलर का ऑडिट, ट्रैवलर का वेपन देने पे 81-200 प्लस अटैक ऑडिट पे, ये ठीक है। ठीक। ट्रैवलर अगर रिप्लेस होगा सईद से तो सरिच्छा क्यों ही करेगी? तो तो सरिच्छा क्या ही करेगी? আমার অডিটের রেশিওটা দেখো। अब तो मैं किसी और के अकाउंट पे आ गया। 196 वैसे ऐसे तो सही साल भी रिप्लेस हो जाएगी अगले साल। वेलकम लार्पन, वेलकम। तैयार हो गया? क्या बात, कॉन्ग्रेचुलेशन लार्पन, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या देखने बोला था इससे? फिर से ऑडिट नहीं, कहाँ है ऑडिट? शर्ल्टन भाई तुम अभी भी गेम में कच्चे हो थोड़ा सा। ये कैरेक्टर लगाते हो एंड भेज देते हो आईडी। मैं सोच रहा कि मैं अब से वर्टिकल पुलिंग करूंगा along with रीजनल रीजन रीजनल सपोर्ट का क्या मतलब? आरडे के साथ मेल्ट खेलोगे तो घंटा ये बॉस मरेगा ना। ठीक से स्पाइरल क्लियर कर दोगे, हाँ। वेलकम आदर्श भाई वैसे, एंड वेलकम दुर्गा, वेलकम। फास्ट कुक कर दूं क्या? वाह, टू पीस टू पीस।
फील्ड देख ले। तीन चैट मिस, हैट्रिक कर दिया ना। पेड और फ्री, फ्री होगा आदर्श भाई। Benny's मेरा भी 70 to 80 पुल में सीसी चली ओशा, क्या बात। बाबा भी कैसे करना, तुम आर्ले से देख लो ना। अपना टाइम याद रखना और मेरा टाइम देख लेना। आज तो बैनेट से वो प्रून निकल गई। We meet at last, meddler. having fun. Go in! Enjoy. सिर्फ मारना भूल गई क्या? Teamwork is dreamwork. Having fun. Enjoy. My turn. Over. Everybody stand up. Wind strike. How would you consider me? Savor the show. Did I scare you? वो एक स्किल नहीं लगा। Teamwork is dream. As one with wind and cloud. Enjoy. ओह, And I was told you were a fearsome warrior. हर एक रीजन का अच्छा सपोर्ट। ओके, नकल नकल हो सकता है मेरा सेकंड का मिनियन नहीं। Let me meet at last, Let's meddler. light it up. Having fun. Enjoy. आज तो बैनर से वो प्रू निकल गई, वो तो बैनर से है भी नहीं। देख लिया, नकल टकल हो सकता है मेरा सेकंड टाइम उसके मिनियन नहीं तोड़ पा रहा, टूटते ही मर जाएगा। चलो, एक तो वो टूटेगा, फिर 2-3 सेकंड वेट करता है, फिर जाके हिट होता है। 170 पुल लग गया सीसी कैल्यूशा के लिए। बकवास टीम है। पेनेट को थोड़ा ईयर इंक्रीज कर सकता हूँ मैं। We meet at last, meddler. Bring it. A gift for you. कर लेता हूँ, ये बहुत ज्यादा
क्या हाल बना के रखा था मिनट का। यार तुम्हारे अकाउंट पे नोब्लेस के पीस कहाँ पे है? 9 नोब्लेस के पीस। मर जाओ ना टेम्पेस्ट, एक काम करो। तुम एक किस पे पानी दोगे, रुको जरा। तुम एक काम करो, अपने हाथ में ऐसे बाल्टी में हाथ चुबो के पानी भरो, उसमें डूब के मर जाओ। अलग से लेने की जरूरत नहीं है पानी। अरे वैसे मोना का पे यूज हुआ क्या तुम्हारा? हाँ यहाँ पे। वेलकम केतन, वेलकम। We need it last, meddler. Having fun? Enjoy. Go in! Cheer. Laid bare. Everybody stand back! Having fun? Enjoy. Overruled! Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Cheer. You consider Wanted my full attention, did you? Let my magic begin. Everybody stand back! Did I scare you? Having fun? Enjoy. The hearth! इसका शील्ड और पहले आता तो ये और जल्दी मरेगा। I was told you were a fearsome warrior. रचना का वेपन का पैसिव और कैरेक्टर यूज कर पाते, मैंने उसका पैसिव देखा नहीं क्या है। We need it last, meddler. Yeah! Bring it! Having fun? ऐसे इस शील्ड पे फैब प्रॉक नहीं होता है कहीं। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, मैं फर्स्ट बॉन्ड ऑफ लाइफ जल्दी ले रहा था क्योंकि अल्ट वर्ल्ड खत्म हो रहा था, इसलिए। We need it last, meddler. एक काम कर दो यहाँ, बेनेटल्ट मारू ही ना, ये अच्छा है। Teamwork is dreamwork! Bring it! Let my magic begin. Did I scare you? I warned you. Favor the shadow peace. Let's light it up! You consider me. Everybody
stand back. Enjoy. Transfix. Let my magic begin. Bring it. Teamwork is dreamwork. Did I scare you? A gift for you. Everlasting as the Oh, हट तो जाएगा। और भी फास्ट होगा। अभी अगर यहाँ निकोल होती तो बेनेट की जरूरत नहीं पड़ती। 535 के हिट मारा था लेवल 9 टैलेंट बर्स्ट पे। Lay me at last, meddler. A gift for wind strider. A grand surprise. आईडी तुम मुझे डिस्कॉर्ड पे डीएम कर दो। Let's light it up. Bring it. Everybody stand back. Transfix. A gift for you. Going in. A grand surprise. I hear children. यूज N3D मोनो पारो में भी N3D मारू। फर्स्ट ट्राई में 76। क्या बात। Lay me at last, Let's meddler. light it up. Bring it. Having fun? Wind strider. Enjoy. Savor the show in peace. Everybody stand back. How would you consider me? Overrule. Did I scare you? बेकार एनर्जी रिचार्ज है बेनेट पे। Having fun? यानसान लो है तो यानसान पे भी भरोसा नहीं है भाई तुम्हारे Lay me at कैरेक्टर से। last, meddler. Bring it. Having fun? ये शिलो भी फैफ टॉक नहीं करता यार। रॉकेट रेट ज्यादा देता है। वो दिन नीचे थोड़ा बफ हुआ है। हाँ अच्छी बिल्ड है। भरो ना मुझे नहीं लगता तुम्हारे अच्छा बिल्ड होगा टेम्पेस्ट। एटलीस्ट बेनेट को देखने के बाद। Lay me at last, meddler. Having fun? I'm going in.
Enjoy. Transfix. Let's light it up. Bring it. Let my magic begin. Everybody stand back. Fallen leaves. Adorn my... Laid bare. Did I scare you? आपका डैड नहीं बस बट कर दिया इसने हाँ MC is nowhere close to Bodhi and Itza. We meet at last, Let's meddler. light it up. Bring it. Having fun. Yeah. Of course, if pressing trials is hard. We meet at last, meddler. Having fun. Teamwork is dreamwork. Wind strike. Let's light it up. Everybody stand back. Could I scare you? Having fun. Enjoy. Overrule. I'm going in. Transfix. Bring it. Teamwork is Save dream. it to show. One with wind and cloud. How inconsiderate of you. Having fun. Enjoy. दो बार सेम आड़े क्रिट्रेट देखता हूँ 81 170 बहुत ही क्रेजी बिल्ड है ये माफिका से इतना कम टाइम माफिका से लगता नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा ईएम वाली बिल्ड है अटैक बिल्ड पे भी इतना सारा ईएम है इस पे ग्लैडिएटर ही चलाओ We meet at last, meddler. A gift for you. एक तो इसकी बेनेट We meet at last, meddler. तो थोड़ा और सामने जाके बेनी फैट इफेक्ट बेनी है ही नहीं भाई वो बेनेट का ट्रायल बेनेट इसका बेनेट इसके पास था ही नहीं
तो गेम वाले ने ट्रायल दिया है। We meet at last, meddler. Let's light it up. A Bring it. gift for you. Huh? Yeah. A Go grand in. surprise. Crash from the sky. How inconsiderate of me. Watch your footing. एक तो ये हवे में रहता है, स्किल ही नहीं लगता। Yeah. Let's light it up. Savor the show in peace. Teamwork is dreamwork. Wind strike. Light of the blazing sun. How inconsiderate of me. Let my magic begin. Bring it. Everybody stand back. Pyroclastic surge. A gift for you. A grand surprise. Incinerate. Teamwork is dreamwork. Light of the blazing sun. Did I scare you? How inconsiderate of me. शील्ड पे मेल्ट नहीं लगता ना, वही वही दिक्कत है। एंड मेल्ट वाले बिल्ड पे शील्ड टूटेगा नहीं। We meet at last, meddler. Having fun? Let's light it up. Everybody stand back. Wind strider. Crash from the sky. Did I scare you? How inconsiderate of me. अरे Teamwork is dreamwork. अभी का मुश्किल है थोड़ा। ओवरलोड यार, इसका हाल से टाइम कम तो हुआ है, मैं क्यों ट्राई कर रहा हूँ ना, वो बात है। मुझे तो छोड़ देना चाहिए था यहाँ पे। We meet at last, meddler. Having fun? Going in. Enjoy. Pyroclastic surge. Did I scare you? Try and stop. Let's light it up. Bring it. Everybody stand back. Why do they never miss? Light of the blazing sun. How inconsiderate of me. Incinerate. Did I scare you? Huh? A gift for you. Going in. Stay focused. Full throttle. Pyroclastic surge. How inconsiderate of me. यार लाइक यहाँ पे दिक्कत है, मावी का ना एक खाली जगह पे जाके लाइक फिनिशर मारती है। ये एक दिक्कत होता है ज्यादा स्मॉल एनिमी पे। यार इससे एक दो और ट्राई मारते हैं, छोड़ते ग्लैडिएटर पीस। 150 ग्लैडिएटर के आर्टिफैक्ट इसके पास। सारे के सारे बेकार के पीस पड़े हुए हैं यहाँ पे। छोड़ दो।
हल को आई फ्रेम कर दिया बॉस ने। We meet at last, meddler. A gift for you. Let's light it up! A grand surprise. मुझे यहाँ पे एक अल्ट मारना ही ठीक रहेगा आई थिंक। हाँ ये टेम्पेस्ट का अकाउंट है हाँ। We meet at last, meddler. Bring A it! gift for you. Everybody Grand stand back! surprise. Overrule! Let my magic begin. Going in! Wind strike. A gift for you. A grand surprise. Laid bare. Teamwork is strength! Did I scare you? Pitiful. We meet at last, meddler. Bring it! A gift for you. Let's light it up! A grand surprise. Transfix! Everybody stand back! How would you consider it? Let my magic begin. Let's light it up! Teamwork is Savor the trademark! show in peace. Having fun? Enjoy. Overrule! Did I scare you? Bring it! Everybody stand back! How would you consider it? Did I scare you? इस टाइम पे इसका फिर शील्ड आ जाएगा। वेलकम वेंकी। लास्ट ट्राई। शील्ड के बाद मजा आता है। We meet at last, Let's meddler. light it up! A gift for you. I'm going in! A grand surprise. Overrule! Everybody stand back! Wind strike. Having fun? Enjoy. Laid bare. Let's light it up! Bring it! इस बेनेट पे अगर मैं एक बार पार्टिकल फनल ना करूँ जो गलती हो जाएगी ना मेरी। किसका अकाउंट है ये? टेम्पेस्ट का अकाउंट है। एक बार मेल्ट ना, मुझे मेल्ट नहीं करना है यहाँ पे। We meet
Having fun? वेलकम थंडर। You need it last, meddler. A gift for you. Let's light it up! A grand Teamwork is strength! How inconsiderate. Transfix! Bring it! Everybody stand back! Wind strider. Did I scare you? A gift for you. A grand surprise. Overrule! Going in! How inconsiderate. I've warned you. Lay back! Bring it! Everybody stand! Did I scare you? Savor the show and feast. How inconsiderate. एक सेकंड कम जाओ। खुश रहो शार्लटन। 270 शार्लटन बोल दिया था तेरी। खुश रहो टेम्पेस्ट। उसने मुझे डीएम किया क्या आईडी? किसने बोला था एबिस के लिए? मेरा टाइम कम ना हो रहा, क्या करूं? मत करो। आई थिंक टेम्पेस्ट तुम्हारे रेजिन ऑलमोस्ट फुल हो गए थे, तो फार्म कर लो। आदर्श भाई ने पता नहीं आईडी तो दिया नहीं। स्टेज कंप्लीट ना की टाइम स्टेज। एक तो हिंदी के बीच में बंगाली मत बोला करो। लो। आर्कन क्वेस्ट ही करना है मुझे। 98 99 400 करोगे क्या? शायद मैं अभी तक आपकी शॉर्ट्स में स्ट्रीम ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं यार। क्या पता निशांत भाई डार्क नाइट ने मेरी स्ट्रीम को एडिट करके शॉर्ट फॉर्म में लाइक जेमिनाई को बोल के एडिट किया होगा। इसका स्ट्रीम शॉर्ट वर्जन में दिखा दो। एंड न्यू कैरेक्टर आता है तो उसका टैलेंट भी फार्म नहीं होता पहले से। यार एक हफ्ते में हो जाता है यार फार्मिंग, देखा जाए तो। मुझे इसको अगर एसेंड करना है तो अभी 50 फुल चाहिए। ये भी हाँ हो सकता है यार, ये डार्क नाइट बहुत खतरनाक आदमी है। तुम्हारा स्टीजियन टाइम देखो ठंडर भाई, तुम अपना स्टीजियन टाइम कम करवा के किसको दिखाओगे? सिक्स 7 यार अच्छा टाइम तो है यार, कितना कम करोगे?
तुमसे करवा के तुम्हें ही दिखाऊंगा। इतने सारे लोगों ने डाय यार अच्छा टाइम तो है यार, क्या कितना ही कम करोगे। कुकी के जगह मीको होता ये 20 सेकंड कम हो जाता ये टाइम। मैं खुश हूँ कि तुम्हारे पास नहीं है। मेरे रेजिन 199। ओहो क्या परफेक्ट टाइम पे आया मैं। ये किसने डीएम किया मुझे? और ये 90 करो उसके पहले। अच्छा ये आदर्श भाई ने मुझे यूआईडी दिया। काम में लगना पड़ेगा अब। टायर वालों को दिखाना है। 5। सबका दिखा दिया। रुको काशी तुम्हारा देखता हूँ कैरेक्टर। लॉग इन कर लूँ इसका अकाउंट। अच्छा इसने मुझे सिर्फ आईडी दिया, पासवर्ड कहाँ दिया? ओए आदर्श भाई पासवर्ड पासवर्ड भेजो। बोला आधा काम से पहले आधा काम के बाद। तो पहले आईडी दूंगा, तुम एबिस करो फिर पासवर्ड दूंगा। ओटीपी ओटीपी कर किसको वापस आ रहे C1 करोगे इसको? 15% डीपीएस इंक्रीज। मुझे पहले भी कर इसको फिर C1 करने का बहुत मन था, बट एक घटिया कैरेक्टर निकाल लिया किसी के मैनिपुलेशन में आके। नहीं नहीं लिनिया निकाला था ना, नहीं खुद वो तो खुद की गलती थी। चारू सब मोह माया है, तुम बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया। ओटीपी आदर्श भाई। ओ आदर्श भाई भी लाइक ओटीपी नहीं दूंगा। सनो सैंडो ने पुल किया होता तो तुम्हारा डर होता नहीं। नकल डकल नहीं कर पाता ना। चलो चलो गाइस, एक अकाउंट आ चुका है, बोलो क्या क्या फीड करना है यहाँ पे। वेपन आर्टिफैक्ट क्या क्या बोलो, क्या क्या फीड करें हम यहाँ पे। मेरे पास सैंडोरे नहीं है एंड ऑडिट पर 50-50 हारा हूँ। अभी मैं वेसना पुल करूँ या फिर आई थिंक वेसना निकालोगे तो वोदियानिसा भी निकालनी पड़ेगी ना। हम्म, यार 11 चेम्बर नहीं किया। अरे यार, या फिर क्या पता कैरेक्टर नहीं कम है कि 11 भी नहीं हो पा रहा। सारों का नकल डकल के लिए उसको C2 नहीं, फिर C2 भी न लगती। ये लोग। ओ हाँ क्या देख, वेट इसके पास सच में कैरेक्टर नहीं है। अरे बाप रे। अच्छा इसका यही फ्लोर आई थिंक मुश्किल से होगा।
यूरोप, ओ माय गॉड, यूरोप में करना था। लाइक तुम्हारे पास यूरोप में अकाउंट है एंड AR50। चलो अच्छा, वो एक वो काकाशी का आईडी देख लेते हैं। ऑलराइट, बढ़िया बिल्ड। और अब तो वही है कि अब थोड़े से अपग्रेड के लिए महीनों तक फार्म करते रहो, और क्या। ओ वेलकम रियाज भाई, अरे मैंने तुम्हारा चैट देख के भी अनदेखा कर दिया। C0R1 फिर C0R1 कोलम्बिना, C0R0 इन्हें फर्स्ट ओकरो से डायर हो सकता है क्या? देखो ये पूछने की बात नहीं है तुम्हारे पास, करके देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हें पता है, तुम मेरे दिल में रहते हो है, इसीलिए जगह कम मिल रहा है मुझे। वेलकम जॉर्ड, मेरा फेयरलेस करोगे? फेयरलेस के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है जॉर्ड भाई। मेरा एक व्यूअर था, उसने अपना घर जमीन बेच के मुझसे फेयरलेस करवाया था। वैसे हो नहीं रहा, तभी पूछ रहा। तो लाइक कितना एचपी? आई थिंक डायर मुश्किल है यार, डायर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो छोटे छोटे मिनियन भी बहुत लेट मरते हैं यार। क्या बफ था, सेकंड में तो आरले पेल देगी ना सबको, आँख खोल के। तेरी तेरी है, सोलो आरले। ऊपर हम लोगों के पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, नहीं ट्रैवलर है, ऑडिट है। 7 टेबल ऑडिट देख के कैसे हो? मैं तो बढ़िया। इमेजिन घर जमीन बेच के भी, बेचने के बाद भी फेयरलेस ना हो, वो तो खुद का रिस्क है यार। मैंने तो साफ साफ लिखा है बिल्ड अच्छा होना चाहिए। तो फर्स्ट हाफ में तो इलेक्ट्रो भी चाहिए ना, भूल गया। तो गाइस, माविका भी है, माविका एंड बरिसा। पहले आर्ले का देखता हूँ मैं। ओह सिग्नेचर अर्ली, माविका पे भी है क्या सिग्नेचर? इस पे भी सिग्नेचर है। अरे अर्ली खो गई, शिट। अर्ली मेश वाली बिल्ड है। ओह इंस्ट्रक्टर, कोई ना, हर 2 रोटेशन में एक अल्ट तो आ ही जाएगा, सही ना। भाभी का अटैक स्टैंड है क्या? हो सकता है 130 EM तो अटैक स्टैंड ही होगा इसका मतलब।
स्लाइड करते हुए 20 एनिमी किल करना है। स्लाइड करते हुए 20 एनिमी किल करना अचीवमेंट है। मुझे तो नहीं हो रहा मोबाइल पे। स्लाइड करते करते मारो। मुश्किल तो है, लाइक सिर्फ स्लाइड करते करते मारो। और क्या, जायरो भी खेल सकते हो फोन में, जायरो तो है। फर्स्ट हाफ किससे करूँ मैं? फर्स्ट हाफ तो कोई भी कर सकता है, नहीं? हाँ, जायरो काम करता है, मैंने यूज किया था। लाइक उस स्पेसिफिक मोड का जायरो अलग है। लाइक शूटिंग वाले मोड पे अलग से जायरो ऑन करना पड़ता है। बट वो उतना अच्छा नहीं है जैसे नॉर्मल बैटल रॉयल में होता है। वो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट स्टिल है। लाइक जैसे तुम नॉर्मल जैसे गेम के सेटिंग्स पे एमिंग जायरो वो वाला नहीं है। शूटिंग का एक अलग सेटिंग्स है। लाइक नॉर्मल सेटिंग्स पे जाके मिल जाएगा। वहां पे एक और जायरो का ऑप्शन होता है। बाय द वे वहां पे वर्टिकल जायरो थोड़ा कम कर देना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हॉरिजॉन्टल वाला मैक्स कर देना, वर्टिकल वाला लाइक अराउंड 4 5 4, ये ठीक रहेगा। पर ऐसे फ्री ना भवे की आंसर मजा आएगा भावी। आंसर है फ्री ना। गंदा फ्री ना मिल रहा है, शिट। इतना खराब बिल्ड कैसे हो सकता है? इतने ही आर्टिफैक्ट गोल्डन ट्रूप थे? माय गॉड। वर्ल्ड लेवल लो कर दूं? बट वर्ल्ड लेवल लो करने से एनिमी लेवल कम होता है क्या? ये तो नहीं पता। डिफिकल्टी के हिसाब से एनिमी होता है ना, फिर ये कह नहीं सकता। नहीं होता, हाँ भाई तो मोड। इसका पुदीना कर्ल भी सेट खाली जैसे हर 2 रोटेशन में आएगा। पुदीना पुदीना की जगह कोलो में रख दूं क्या? थोड़ा पुदीना यूज नहीं करता तो निकाला क्यों? थोड़ा सा लूनर लूनर डैमेज आ जाएगा उससे। कतई जहर। ओडेट रख दो टीम में, भरेसा ही मेल्ट कर देगी। आगे यूट्यूब पे कारा जादू लगा के। इसका ऑडिट कैसा बढ़िया? फर्नेस तो है, ये भी है। रेशियो खराब है। मैं एक चीज बाद करवाना है, अभी तो नहीं, बाद में कभी कोशिश कर लेता हूँ। ये सब नहीं करता मैं। वो मेरा आउट ऑफ सिलेबस है, वो सब नहीं करता। वो एक बार यानसान का भी अल्ट आएगा कि नहीं वो भी तो देख लो। यानसान का आ सकता है कहीं। तो मान लो अगर इस टीम में फ्री ना हटा के गलती से भी शिवरूस आ जाए। ओ नाइस। उससे तो अच्छा ही रहेगा। ओके, मान लेते कि यहाँ पे एक नोब्लेस मिसिंग है, बाकी तो काम हो जाएगा। ओ शिट। नहीं, इसके बाद तो मुझे यानसन दिखा, शेवरूस दिखाया नहीं, पता नहीं कौन था वो। अ, हम्म,
यही ट्राई करते हैं, कुछ तूफानी हो जाए। स्काईवुड एटलास, कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आदर्श भाई इस वेपन का? इस पे कुछ भी चलेगा, लाइक कुछ भी बता दो कि क्यों है ये वेपन। सिग्नेचर है इसके पास। ट्राई करते हैं, आज कुछ सच में तूफानी हो जाए। तो अगर इस अकाउंट पे अगर मैं मिजुकी और डेट ट्रैवलर खेलता तो भी आई थिंक फर्स्ट हाफ क्लियर हो ही जाता। Try it, stop. Let's move. A moonlit night for all. Light up the blazing sun. Oof. It's justice o'clock. Yeah. Hi. Yeah. Oof. It's justice o'clock. Yeah. Whoa. A new moon rises. Pyroclastic surge. Quick as a flash. Start them. Headbutt. Charge. Yeah. Oof. Hero incoming. Yeah. एनिमी मर तो रहे हैं बट बहुत कम Light up the मर रहे हैं। blazing sun. Full throttle. Faster. Stronger. Charge. Kapow! Charge. Yeah. Flame. A new moon rises. Pyroclastic surge. Rev the engine. Control breathing. Start the clock. Yeah. सेकंड हाफ तो जल्दी हो जाएगा हार्डली इसके पास। Justice o'clock. Yeah. Oof. Look out below. Charge. Yeah. Wrath from the sky. तो ज्यादा टाइम नहीं लगा दिया मैंने, शिट। Full throttle. Step aside. Let's surge. Green moon सबसे ज्यादा टाइम लगा दिया। Pyroclastic surge. अरे यार कितना लेट एचपी आता है इसका। Headbutt. Smash down. ओह अब तो रीसेट करना ही पड़ेगा। नहीं कोलोमिना को रहने देते ना, लाइक कुछ मजा नहीं आया। अच्छा मैंने रीट्राई क्लिक किया। अच्छा यानसान का बफ कोलोमिना को दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका मतलब किसी को भी बफ नहीं जा रहा ना। हटा देते कोलोमिना। शांगलिंग लगा सकते हो, थिंक कितना ही बुरा होगा। इससे अच्छा फुरीना। लाइक फुरीना एंड कोलोमिना यूज करने करूँ तो लाइक यानसान का बफ ठीक से अप्लाई कभी होगा ही नहीं, एनिमी पे हाइड्रो ही आएगा। ट्राई करके तो देखते हैं। आई थिंक शेवरूस देना ही ठीक रहता है। एक बार ये ट्राई करते हैं देन शेवरूस लगाते हैं, ठीक है? थोड़ा रुकना, मैं तब तक पॉज रहूं क्या? ये क्या बात कर रहे हो? ऐसे रुक थोड़ी सकता हूँ मैं। Full throttle. Eat this. Go back. Get them. Faster. Stronger. भाग गया वो। एक काम करते हैं डायरेक्ट शेवरूस ही लगाते हैं। सिंपल 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 सिंपल।
गलत कैरेक्टर पे स्विच कर। Kapow! Charge! Yeah! Hi! Yeah! Pyroclastic surge! Hands where I can see them! Charge! Yeah! Headbutt! Hi! Light of the blazing sun! Justice will prevail! On my... Yeah! Hi! You're pretty tough! Yeah! Hero incoming! Yeah! Pyroclastic surge! टॉर्च कर देगा। Try and stop me! Stop right there! Control breathing! Let's move! Oof! Heads up! Charge! Yeah! Wrath from the sky! Full throttle! You asked for it! Final! Quick as a flash! Start the... Hi! Yeah! Yeah! Hi! Yeah! Oof! It's justice o'clock! Yeah! Stop right there! Faster! Stronger! On my light of the blazing sun! 1 मिनट से भी कम टाइम है। कौन से बॉस थे? एक बॉस आएगा, देन वो आएगा। Overrule! Going in! Show no mercy! You two! Time to... Transfix! Teamwork is dreamwork! एक रोटेशन में खत्म हो जा। Suffer the wrath of me! वो फिर से कर लेंगे नहीं तो। Everybody stand back! Bring it! Get to work! Witness my rise. Overrule. बाद में करते इसका। ये इसका मेन अकाउंट है और इसका सेकंड अकाउंट भी है AR50 का। Justice will prevail! Control breathing! Let's... It's justice o'clock! Oof! Look out below! Hi! Yeah! Headbutt! Hero incoming! हाँ? Pyroclastic surge! Full throttle! Final warning! Faster! Stronger! Start the... Oh shit! Rev the engines! Oh, light of the blazing sun! Incinerate! Ugh! Drop your weapons! Hands where I can see! Control breathing! On... Hero incoming! Yeah! Yeah! It's justice o'clock! Yeah!
अरे गलत कैरेक्टर पे ले लिया स्विच करके। Try and stop me. ये फिर से शील्ड लेगा वो। एंड वेलकम रीपर। गलत कैरेक्टर लेके आया मैं यहाँ पे। मुझे वो ऑडिट वगैरह लेके आना चाहिए था। You asked for it. Stop right. Control breathing. Start the. It's justice o'clock. Yeah. Yeah. Charge. Yeah. Headbutt. Right. Yeah. Breath from the sky. Incinerate. Full throttle. Drop your weapons. Faster, stronger. On. Light as a blazing sun. Justice will prevail. Stop right there. Yeah. Heads up. Hero incoming. Yeah. Charge. Oof. Hi. Yeah. Pyroclastic surge. Final warning. Control breathing. Let's headbutt. It's justice o'clock. Yeah. Yeah. Look out below. Incinerate. Try it. It's justice o'clock. Light up the blazing sun. You asked for it. Drop your weapon. Yeah. It's justice o'clock. Yeah. ये तो Yeah. Stop right there. Quick as a flash. Start the clock. Breath from the sky. बाय बाय निशान भाई। Incinerate. Incinerate. Drop your weapons. Faster, stronger. कैसे होगा? On my mark. Hi. Yeah. Hero incoming. Yeah. Light up the blazing sun. आई थिंक फुल मावी का डीपीएस लेकर आना चाहिए था यार, वो ज्यादा अच्छा होता। Light it up. Go it is. Fulfill our pact. Lolling, East Papa, get him. Laid bare. Teamwork is dreamwork. Show no mercy. You two. Time to. Your salvation. Be still. And know. The hearth ओह मर ही गया, शिट। now extinguished. ये जो टीम है इससे लास्ट वाला तो हो पाएगा? मे भी हो जाए, कर ही लेते, सह के चले जाते आगे। बाय द वे आज वीकली बॉस में रेजिन स्पेंड कर देना। वीकली बॉस कौन सा बता देना मुझे नाम। Try and stop me. Justice will prevail. Control breathing. Let's move. It's justice o'clock. Yeah. Headbutt. एक तो विच्छेद का भी ऑरेंज ही भरे। अरे 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 ओहो, Hero incoming. Yeah. Oof. It's justice o'clock. Full throttle. Incinerate.
Quick as a flash. Start the. Yeah. Charge. Yeah. Oof. Charge. Yeah. Headbutt. Charge. Final warning. Control breathing. Let's move. Pyroclastic surge. Stop right there. Faster, stronger. On my mark. Yeah. Height. Yeah. Oof. Charge. Headbutt. Charge. Ah. Chess boss Raiden and Dotore 2. Okay. Raiden boss. स्क्रीनशॉट लेकर रखता हूँ मैं. Transfix. Bring it. Going in. Get to work. Suffer the wrath of Eastleigh. Let's light it up. Ah. Laid bare. Let's light it up. Let the mountain's veins boil. Bring it. Everybody stand back. Show no mercy. ओहो अरे इसका अच्छा इसका शील्ड चला आ गया. Let's light it up. Transfix. I'm going in. Fulfill our path. ना कम टाइम के लिए नीचे गिरता है ये यार. You two. Time to end them. Ow, ow, ow. Show no mercy. Laid bare. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Get to work. Bring it. Fulfill our pact. Suffer the wrath of कल मिलते हो कि How dare you! Hear the echoes of the valley. Ow, ow, ow! Everybody stand back! Get to work! Transfixed! Teamwork is dreamwork! Bring it! Let's light it up! Fulfill our pact! Everlasting as the moon. नहीं ये 3 स्टार नहीं होगा तो एक 2 स्टार लेके भी क्या होगा, बाद में अलग टीम लेके 3 स्टार करेंगे इसलिए. So we're doing this the hard way. Try and stop! You asked for it! Quick as a flash! Hero incoming! Yeah! Hero incoming! Yeah! Headbutt! Justice o'clock! Pyroclastic surge! On my mark! Oof! Yeah! It's justice o'clock! Headbutt! Justice o'clock! Yeah! कुछ देर बाद ओके. Stop
breather. Let's move. Hi. Yeah. Yeah. Charge. Stop. Justice will prevail. Drop your weapons. Pyroclastic surge. Faster. Stronger. Start the clock. Kapow. Hi. Yeah. Yeah. It's justice o'clock. Yeah. Oof. Kapow. It's justice o'clock. Piercing us. Yeah. Light of the blazing sun. Try and stop me. Stop right there. Quick as a flash. Let's move. Headbutt. Charge. Yeah. Yeah. Heads up. Charge. Volcano kablam. Yeah. Burn it down. Pyroclastic surge. दो बॉस है ये तो ना होगा मुझे लग रहा है। Going in. Show no mercy. You two. आई थिंक हो जाएगा। Overruled. Teamwork is dreamwork. Bring it. Get to work. Suffer the wrath of me. Laid bare. Let's light it up. Everybody stand. My turn. Transfix. Off we go. I'm going in. This shall. ये हो जाएगा। फर्स्ट हाफ में बहुत खराब टाइम लिया था मैंने। हाँ लाइक आधे हील नहीं हुई थी और उस अल्ट में So we're doing this the hard way. Light of the blazing sun. Hands where I can see them. Controlled breathing. On my mark. It's justice o'clock. Headbutt. It's justice o'clock. Yeah. Yeah. It's justice o'clock. Pyroclastic surge. Full throttle. Faster. Stronger. Start. Oof. Hero incoming. Yeah. Yeah. Hero incoming. Yeah. Light of the blazing sun. Justice will prevail. Let's move. Headbutt. Charge. Yeah. Look out below. Hero incoming. Yeah. Oof. Look out below. It's justice o'clock. Final warning. On my mark. Quick as a flash. Wrath from the sky. Incinerate. बहुत टाइम बचा दिया इसका। Overruled. Teamwork is dreamwork. You two. Time to end. Let's light it up. Everybody stick. Show no mercy. Laid bare. Going in. Keep lolling. Eat Papa. This is where
दोनों के दोनों मेल्ट नॉन क्रिट। Laid bare. That's gonna hurt in the morning. I'm going in. Show no mercy. इसीलिए इंस्पेक्टर सेक्टर ही नहीं खेलना चाहिए। 2 रोटेशन में अल्ट आता है इसका। कम से कम 220-30 यार्ड चाहिए, वो भी एक टैब यूजर के साथ। पर एक्चुअली एक दो पीस मिला फाइनल ऑडिट के लिए, पर डैमेज भी कुछ खास नहीं आ रहा। हाँ, टैलेंट अपग्रेड तो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हाफ को थोड़ा बहुत आर्ले मोनो पायरो करवा के सेकेंड हाफ में मॉबिका खेल सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर मिजुकी बिल्ड देखो, लेवल 8 का टैलेंट है। बाय द वे वीवी यूज नहीं होता इस पे, स्टेला वाले बिल्ड पे। या फिर टू पीस ईएम गिल्डेड न्यू वाला सेट वीवी यूज नहीं होता। बट बफ है तो ये मार तो देगी। है, अरे बाप रे। चैन को $1 मिला उसके ड्राइंग पोस्ट पे। फिर बात है कि क्यों मिल रहा है $1 ना, मैं तो जस्ट इस सब चीज के लिए $1 नहीं मिल रहा होता है। वेलकम बैक आतिश भाई। वेलकम जोरो, वेलकम। तुम्हारा वो लेजी ट्रैवलर वाला शॉर्ट्स में अच्छे व्यूज है। टीच मी एंड टू जंप। नहीं भी खेल सकते क्या हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड में? हाँ आई थिंक ये गाना गाने के नाम पे ये लोग चिल्लाते हैं। इन लोग को हल्का हल्का साउंड आ रहा होगा।
कहाँ हूँ मैं? घर में हूँ। ये कौन सा वेपन? ईथर लाइट। इंटरेस्टिंग चॉइस। क्या हो रहा है बैकग्राउंड में? लाइक अरे मोहल्ले में किसी घर में कुछ पूजा वगैरह हो रहा होगा। Settle down. Let the world collide! Tell me what you see. Let the mighty be humble. बाय द वे ये इसने बोला था फुरीना खेलता नहीं, तो क्या इसके टैलेंट भी लेवल अप होंगे? Bow your head. Let my name echo in song! Time to say hello. 18,000 मार रहने के लिए। The tides beckon. Settle down. इस नीवी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है ना भाई। कैंसिल, ये टीम कैंसिल। आर्ले के साथ हम लोग कुछ नीचे से बैनेट हटा देते हैं। नीचे से एक काम करते हैं, नीचे हम लोग फुरीना डाल देते हैं। ये एक ट्रिक होगा हमारा इस वाले बॉस को मारने के लिए। एंड इसको भी आज कुछ तूफानी करते हैं। ये एंड हम लोग यहाँ पे आर्ली बिल्ड बहुत अच्छा है। शिंगचो डाल देते, शिंगचो और क्या बोल दिया, डाल दिया। एंड लास्ट में सुक्रोज ही डालते हैं, क्योंकि गलती से कुछ रिएक्शन लग जाए तो। वेलकम पावेल्स, वेलकम। शिंगचो आर्टिफैक्ट नहीं, ये सब छोटे मोटे काम में नहीं करता ये। शिंगचो आर्टिफैक्ट के साथ, बिना आर्टिफैक्ट के साथ सेम काम आता है। Teamwork is dreamwork! Witness the power of Gua. Rain outlines your fate. Absorption test! Transfixed! I'm going in! Let me weave you a verse. Stay clear! Overruled! Everybody stand back! Know my sword! Witness the power! Absorption test! वीवी तो काम ही नहीं आता ऐसे टीम पे। Transfixed! I'm going in! Let's light it up! Rain outlines your fate. Know my sword! Rain cutter! भाई एक 3 एनिमी मिलके ट्रायंगल बना दिया। मे बी इस टीम से सेकंड वाला बॉस हो जाए, फर्स्ट वाला नहीं। Overruled! अरे अरे अरे, Teamwork is dreamwork! मीको से ट्रेनिंग लिया क्या इसने? Rain outlines your fate. Animal Tech 63. Everlasting as the moon. Transfixed. Witness the power of Gua. I'm going in. Stay clear.
बाय बाय पिंकी भाई। ये टॉप F2 टीम में, इस टीम में एक दिक्कत भी होता है, ठीक से पायरस वर्ल्ड नहीं हो पाता है। Laid bare. Witness my rise. Overruled. Teamwork is dreamwork. Know my या फिर होता होगा, witness the power of Google. मेरे रोटेशन ठीक नहीं कर रहा है। Transfixed. Try it. Let the world collide. Let the mountain's veins boil. Bring it. Light of the blazing sun. Full throttle. Letting praise names echo. The lightning echoing song. Strike up the suffer the wrath of Eatfleet. Get to work. Wrath from the sky. Incinerate. Light of the blazing sun. Incinerate. Incinerate. Hear the echoes of the valley. Bring it. Time to shine. Show no mercy. Wrath from the sky. इस टीम से सेकंड हो जाना चाहिए मुझे जितना लग रहा है। Overruled. I'm going in. Know my sword. Ring cutter. Stay clear. लाइक यहाँ पे हाइड्रोस वर्ल्ड हुआ। Laid bare. Teamwork is dreamwork. Absorption test. Overruled. Let's light it up. Rain outlines your fate. Witness the power of Google. I'm going in. Swirl, where to? Know my sword. Teamwork is dreamwork. Stay clear. Laid bare. Let's light it up. Everybody stand back. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Huh? I'm going in. Animal Tech 63. Wanted my full attention, did you? हाँ Rain outlines your fate. Rain cutter. Huh? Everybody stand back. Stay clear.
और it कितना तक डैमेज दे देती है एवरेज? मेरी वाली 3.5 लाख मार देती है 8 लेवल टैलेंट पे। अल है तुम बता। Laid bare. Rain outlines your fate. Huh? Let's light it up. I'm going in. Absorption test. Transfixed. Teamwork is dreamwork. Animal test 6308. Laid bare. Let's light it up. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Everybody stand back. Absorption test. Overruled. Know my sword. Huh? Teamwork is dreamwork. Animal test 63. Transfixed. Let's light it up. Rain cutter. I'm going in. Absorption test. Let the mountain's veins boil! Let the world collide! Get to work! Lolly, East Papa, pyroclastic surge! Incinerate! Incinerate! Your salvation. Bring it! Strike a pose! Hear the echoes of the valley! Suffer the wrath of each light of the blazing sun! Your sins. Let my name Oh yeah. song! Showing you... Holy drop. One more sin. Try and stop me! Pyroclastic surge! Incinerate! Try and stop me! भाई सिर्फ 2-3 तोड़ने होते हैं, सब नहीं, सब मत समझा नहीं क्या? अच्छा, लाइक वो एनिमो पार्टिकल। 3 पार्टिकल नहीं, 3, हाँ 3 तोड़ने से हो जाता है, 3 तोड़ना पड़ता है। था उस मूड में था, तोड़ दिया और क्या। अब अब मैं फर्स्ट में माविका एंड सेकंड में आर्ले चलाऊं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 एनिमी फर्स्ट में आ रहे हैं। तो ये नीचे आर्ले, आर्ले का बिल्ड अच्छा है, ये यहाँ पे थोड़ा प्लस पॉइंट है। आर्ले के साथ मैं पेन उठाता हूँ, इसको चाहिए होगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेम ये टीम यूज कर सकता हूँ। जस्ट उल्टा। वेलकम पीस, आर्ले में पॉजिटिव फेस।
गेंशिन एडिक्टेड हो? हाँ। Full throttle! Show no mercy! Keep lolling! These pops light up the blazing sun! Incinerate! Incinerate! Let the world collide! Letting great dreams echo! Bring it! Get to work! You two! Time to... Pyroclastic surge! Rise with the... Time to shine! Show no mercy! बट टीम ऑप्शन नहीं थे यहाँ पे ज्यादा। Incinerate! Let my name echo in song! Let the mountain's veins boil! Shower me with... Fulfill our pact! See lolling! Eat papa! Light up the blazing sun! Incinerate! Try and stop! Let the world bring it! Hear the echoes of the valley! Show no mercy! Wrath from the sky! Incinerate! Rev the engines! अरे यार मर जाता उसी कॉम्बो में। Get to work! Pyroclastic surge! एक मिनट पे काम हो तो जाना चाहिए। लक अच्छा हुआ तो। Lazy bear, witness the power of good one. Everybody stand back! Stand clear! No, my sword! Ran out! Mine's your fate. Let me weave it. I'm going in! Animal test 63! Overruled! Teamwork is dreamwork! Animal hypostasis Commendable. ये वाली सीडी से कॉम्बो कैसे करते हो? कौन सा वाला सीडी से? देखो आता तो सभी है मेरे को। सिली अच्छा लाइक विश सिमुलेशन है ना वो। ट्राई तो किया है। अच्छा मैंने देखा है लाइक किसी को यूज करते हुए वो सिली विशर वाला। Try and stop! Bring it! Strike a pose! Let my name echo and fulfill our pact! Suffer the wrath! Light up the blazing sun! ये वाला। Incinerate! हाँ एक तो ये कॉम्बो दिखाते दिखाते खराब हो जाता है ना, गुस्सा बहुत आता है। Time to shine! Yoo-hoo! Get to work! Keep lolling! Eat papa! Pyroclastic surge! ये वाला थोड़ा मुश्किल तो है। My name echo in song! ज्यादा स्पैम करना पड़ता है बटन। Suffer the wrath of the... Wrath from the sky! Incinerate! Incinerate! Try and stop me!
मेल्ट लग जावे अपनी। Bring it. Get to work. Light of the blazing sun. Incinerate. तो और खराब टाइम लगा, लास्ट वाला ज्यादा अच्छा था। Full throttle. Let my name echo in song. Show no mercy. Lolling, East Papa, pyroclastic surge. Incinerate. Time to shine. Yoo-hoo. You two. Time to light of the blazing sun. Incinerate. Incinerate. Bring it. Shower me with that. Get to work. Suffer the wrath of me. Wrath from the sky. Incinerate. Incinerate. Let my name echo in song. Strike a pop. Let the mountain's veins boil. Show no mercy. Lolling, eat Papa, pyroclastic surge. Try and stop me. Shower me with praise. Let the world come alive. Get to work. You two. Time to light up the blazing sun. Incinerate. Fulfill our pact. Incinerate. एक सेकंड ज्यादा किया मैंने इस बार, तो हो तो सकता है लास्ट टाइम के जैसे। Lay to bear. Witness the power of good. Everybody stand back. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Then let's light it up. Teamwork is dreamwork. Transfix. Body and no, my sword. Everybody stand back. Wanted my full attention, did you? चलो काम हो गया। इंडियन बॉयज अकाउंट का नाम है। ट्राई करो, क्या 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 ट्राई करूं मैं अब? हो गया इसका अब 40 स्टार। अच्छा वो सिली विशर, मेरा आर कॉन्क्वेस्ट कब खत्म होगा? हाँ, लाइक कितना हुआ? 18 लाइक। हाँ, सिली विशर। यार बात है कि वो न्यू नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत लोगों ने यूज कर चुका, पुराना हो गया वो।
मैं जाता हूँ फियरलेस में ट्राई करने, जस्ट फर्स्ट वाला बॉस नहीं हो रहा। वो अलग बात है कि मेरे कैरेक्टर बिल्ड नहीं है। वो नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। ये Add as. अपडेट हुआ थोड़ा। Thank you for completing today's अपडेट का commissions. मतलब तो वही Here's न्यू your बैनर reward. ऐड होंगे और क्या। Add as. ये बाय द वे इस बार वो 60 प्रीमोस दिया था ना, मैंने नहीं लिया ना। 26 दिन बाकी है, कोई ना, बहुत टाइम है। ये भी नहीं किया मैंने। ये करवा दो मेरा कोई। मेरा अटैक बिल्ड ही नहीं हो रहा। और कन्क्वेस्ट में मजा आता है। ये स्ट्रीम में करने में मजा नहीं आता, लाइक अकेले में एकदम बढ़िया सा फोकस करके। আমার ওডেটটা দেখো একবার ফিওলে। बहुत अच्छे टाइम में बोला शोमदीप भाई। It's almost time. We should wake Odette. How are you faring? Oh, not going to argue with that. I'll take a quick nap. If you start to feel sleepy, wake me up anytime. वेकी वेकी, ओडेट आ गई। It's finally time for Odette and फीहोले। I to share the night watch. I came here to get information from her in the first place. Maybe I should think about what questions I want to ask. वेकी वेकी, सुबह हो गई मामू। How long are you मामू, gonna keep staring सुबह at हो me? गई Couldn't मामू। sleep. My mind's been अरे running मामू। haywire. Plus, there's something I've been meaning to talk to you about. I had a hunch that you wanted a conversation too. Let's take this chance to clear the air, shall we? I just had a simple question for you, really. It's... हो, नाइस एंगल। किसने डिजाइन किया ये वाला सीन? ओहो। Rosaline. In her final moments... I see. Well, no. She was utterly ruthless in pursuing her goals. That kind of person should be hard to miss, and yet, even though I never approved of her methods, and she was an abrasive person. Oh, she told you. I guess that makes sense. I think she and Rosaline मजा आ गया were ना on आर्कन pretty good क्वेस्ट करते terms. करते। आई थिंक आदर्श भाई इसी के लिए, इसी का बोल रहे थे कि आर्कन क्वेस्ट में बहुत Rosaline मजा आता wasn't the है। kind to सच कहा gossip about आदर्श this भाई, sort of thing. मजा तो है। Not that it's any huge secret to me, though. When I was a child, I had to join the... It was extremely grueling. And it didn't exactly come naturally to me. All I could do was try to ignore the biting cold and practice, practice, practice. I was a newcomer who'd managed to make a good first impression on a harbinger. Every day was a struggle against the cold. After enduring all that, I've become almost immune to the sensation of pain. I suppose that, surely, any child... So, I put an equal amount of effort into my ballet.
because it was my way of telling her the Fatui's demands and हम your लोग भी बैले expectations सीख of ले me क्या? are not what I wish for. I think she probably blamed my poor performance in training on my passion for ballet. She knew my heart. One time, when I was secretly practicing a dance at night, she suddenly showed up. I told her, "You don't deserve to watch the dance I learned from my mother." She looked stunned. भाई I guess ट्विस्ट she है was एक बकवास surprised that वाला I डांस rushed का. out first, before she had the chance. But strangely enough, on that occasion, she wasn't fierce with me like she was during training. Instead, she fell silent for a moment, and then left. छोड़ के After चली गई that, इसको. she never interfered with my dancing or asked me how it was going. She never came to watch me dance again either. She was. But even now, whenever I take out this core Ignis, I can't help but think of that night. Of the look on her face. Sort of. Although ये कोई gift परफ्यूम है might क्या? be too kind a इसको term. लगाओ तो This is her आग लगा flame देगा. sealed within ice. A symbol of her favor, yet she knew the सिन्योरा location of every के piece of core Ignis. कबर पे If any कोलोमिना recipient started लेकर acting जाओगे तो वो गाना suspiciously, गाएगी. she'd be on to कौन them गाना immediately. गाएगी? So, when news of Rosaline's death reached Snezhnaya, many people immediately crushed their core Ignis. It gave them a profound sense of relief, like they'd broken free from her shackles. कोलोमिना गाना गाएगी. But I kept mine. With my sensitivity to pain being as dull as it is, the warmth from this core Ignis is one of the few things I can still feel clearly. I still wonder, did she really come to तो stop अभी me एक that night? पेस का मैच खेलोगे क्या? I wasn't sure. I guess she didn't leave anything behind. Not that I expected her to. अभी मेरा It's fine. रूनी 104 It's का हो just गया है, a ठीक bit है? of a shame that we couldn't settle our differences before the end. Mhm. She did. नहीं. Are you sure she was talking about this event? Huh. No, she didn't. I didn't even find out that she'd gone to Wait. In that case... Okay. I will. Thanks for letting me know. अच्छा कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रही है क्या यहाँ पे? अच्छा मैं तो ध्यान ही दे something रहा. I'm trying to figure out. I'm beginning to suspect that Paimon's mystery illness is being caused by the energy research behind Project Stygian. हराम बेल खेलूंगा. यार Paimon's मुझे very बहुत सारे प्लेयर important के to नाम me, नहीं पता. so I have to get to the bottom of this. I figured that since you're Lelik, you might know something about all this. The ये ultimate कटसिन goal of खत्म this होने के बाद energy एक मैच खेलेंगे, experiment ठीक है? is to create a weapon for the fight. The weapon's construction was completed in Nodcry. Now, all that remains is to arm हेलो it ब्रो. with a sufficiently अरे powerful धन्यवाद energy. योरिची भाई, धन्यवाद. तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था मैं. तो बोलो Yes, आज क्या लंच the किया तुमने? weapon's development and all the related अरे वेलकम experiments are पीला वाली, overseen by वेलकम. Lord Piero, the Jester. मैंने And the आर्कन क्वेस्ट lab is कंप्लीट कर दिया. located deep within यार the मेरा art. हो ही I'm नहीं not रहा है. sure why this हर दिन experiment would be स्ट्रीम पे making आता हूँ, ठीक Paimon है? feel unwell, though. आर्कन क्वेस्ट करने के नाम The पे best way to get to the कोई ना bottom कोई of it would स्टीजन be के लिए together पकड़ा in देता है, person. कोई एबिस के लिए पकड़ा देता है. Once we get out of एक here, रिव्यू चालू I'll होता है, help 10 you आ apply जाता for है an entry permit. और होता ही नहीं है मेरा काम. फुल डिफेंस. And I'm hardly the organization's proudest member, as you know. You answered my question about Rosal. What's wrong? Are you not feeling well? ऑलमोस्ट फिनिश्ड में आ गए हो. अच्छा ज्यादा नहीं है इसका मतलब. ओह You two seem to be hitting it off. I thought you were sleeping. Of course I was. In the military, one learns to fall asleep quickly.
even in the most inhospitable environments. Like It's vital to staying alert and energized. सोने में इसने Why? डिप्लोमा Is किया, ठीक है, something wrong? डिप्लोमा. Even if he was awake, he can't have overheard us, right? अरे बाप रे. Well, thank you both for keeping watch. Traveler, I'll take over for now. It's your turn to get some sleep. तो मुझे ही नींद क्यों आ रही है? यहाँ एक कंप्लीट करना है, उसके बाद एक एरिया में फाइनल This is our second night here, सीन में भी but 1 at least घंटा I 1.5 found घंटा. out a little more about Paimon's condition. ओके. I hope she's been sleeping well the past मुझे तो couple लगा of था अभी भी days. 2.5-3 घंटे बाकी होंगे. 1-1.5 घंटा सुन के थोड़ा सा रिलीफ मिला. आई थिंक ये आज नहीं करूंगा. Why do I feel like I'm being watched? हाँ. वाह. Seriously? Is this payback for when I stared at her earlier? But I thought she was asleep. कैसे हो? मैं बढ़िया फाव पर्सन. वेलकम बैक शालग्राइन. ट्रैवलर बी लाइक मन में I लड्डू better फूटा. try and get some sleep myself. Lilac is noticing you. अरे सपने में आ गया. Hey, what are you spacing out for? ओ आज You're मैं reaching your भी एक limit सपना देख रहा था. मैं चाय बना रहा था. मैं कहीं पे किसी रिश्तेदार के घर में गया था. Do you remember? तो वहाँ पे सो रहा था. उठ गया, देखा कि वहाँ पे किचन में Time's एक lost all meaning. Ever बावर्ची चाय बना रहा है. ever तो मैंने उस बावर्ची since को we किचन से noticed भगा दिया और मैं खुद that- चाय बनाने लगा. that thing. A And star key? जिस Or चीनी नहीं मिल रही star? थी, एक चीनी का Anyway, डब्बा था. the person who वहाँ named पे it was लाइक swallowed by एकदम the black स्क्वायर mist. बड़े बड़े साइज के पिंक कलर के चीनी थे. पिंक नहीं, थोड़ा सा पर्पल कलर के चीनी थे. पता है. दिन मैंने वो चाय में डाल दिया. लाइक Whatever वहाँ it's called, लाइक उस वर्ल्ड में ever since we चीनी noticed वैसा ही it, दिखता है. we've been पर्पल walking कलर up का and up, लाइक hoping that as long as we reach it, we हाफ can मिलीमीटर find a way out of this मिलीमीटर नहीं है, place. हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर के चीनी होता है वहाँ पे. But पिंक it नहीं, seems पिंक नहीं, like no पर्पल matter how कलर था far वो. we walked, गलती से पिंक बोल दिया. we never got any वैसा कलर closer. का चीनी था वो. डाल दिया, बना दिया चाय मैंने. ओ लाइक बिना दूध वाली चाय, वो क्या बोलते हैं, लीकर चाय. देन आगे थोड़ा सपना देख ही रहा था कि किसी ने कॉल करके उठा दिया. मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा. देखो, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई स्पॉइलर देनी है तो मुझे स्टोरी समझ नहीं आएगी. Not again! I've lost count of how many times we run into them. Careful! अरे हाँ, अरे मार ही दिया यार. Backup is ओ एचपी भी तो है यार. ये भी उठा लेता हूँ. वेलकम वीके भाई, वेलकम. ए ब्रो आगे जाओ, बाद में आपको शॉकिंग सरप्राइज पता लगने वाला है. Here they come again! You wanna fight? Let's go! Gonna cleave ya! Yourself a straggler. फिर तो मैं इनको बिना मारे चले जाऊँ क्या? लाइक या फिर मारना पड़ेगा ये लाइक.
ये क्या मतलब वद्दा वद्दा बोल रहा है ये? वद्दा। अच्छा अच्छा, पूरा नहीं मारे तो ये खुलेगा नहीं। अच्छा ये मैं बिना मारे। हाँ हाँ ठीक है योडी जी, डिलीट कर दिया। Monsters ahead of us, डिलीट कर beasts दिया। behind us. Feels like there's no one. Fine. डिलीट कर दिया। बाहर गिर जा हाँ। इस एंगल पे गिरता ही। अरे अरे ओ हाँ ओ। डैमेज नंबर देखा तुम लोगों ने? 20 मिलियन। Are you hurt, Coolish? तो ये 20 मिलियन डैमेज क्या मेरे No, अचीवमेंट पे दिखेगा? I'm fine. क्योंकि ये तो It's just ओपन वर्ल्ड में ही किया गया है, सही suddenly ना? चाहे क्वेस्ट के अंदर हो। I get you. In fact, yeah. Otherwise, why would it always be out of reach? चेक करना पड़ेगा। we know you mean well. Thank you, friend. You're going to अगर continue, आपने कुछ भी aren't you? क्वेस्ट का I लीक admire देखा नहीं that. तो आपके लिए कुछ चीजें हैं। हाँ लाइक मैंने given एक्चुअल up. में क्वेस्ट नहीं देखा आगे, मुझे सीरियस नहीं पता। It's not an illusion. We really are getting closer to the star. नहीं होगा बिकॉज ये ट्रायल ट्रैवलर है। Congratulations. You're the first अरे person to यार make it here. The black mist has stopped rising. Its hunger is satisfied for now, having devoured your two companions. This is a good opportunity. I'll let you get some rest before we continue. Hmm? What do you mean, leave? The star represents the starting point. ओडेट It's the थोड़ी सी waypoint for the काली beginning. काली नहीं लग रही? लाइक पता नहीं लाइक या फिर मैं ही रेस्ट बन गया। Congratulations on reaching the starting point. Once you are ready, we will head out and walk upwards. Huh? What's wrong? Hey, don't give up before the journey's even begun. नेवर होगी काली। Rampana! Rampana! अरे ट्रैवल लड़की बन गई। Is that Vodyanitsa's voice? वो सच में बन गई। शिट। Wake up! Please अच्छा wake up! और नहीं, अलग अलग ना 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 माय बैड। अरे अच्छा ये सारे टपक गए। टे 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 टे। The situation is identical to that of the two casualties yesterday. टे 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 We टे cannot ascertain the cause टे। of death. At least there are some elements that we can rule out this time. They slept on the stage with everyone else. So I suppose the surrounding environment मरेंगे। can't be a relevant variable. Rampana. Coolish. अब ये थोड़ी सफेद लग रही है। Weren't some of us keeping watch last night? 3 of us, in fact. How could you not notice something was wrong? I'm as confused as you are. Certainly nothing unusual happened on my watch. Likewise, and from what I've observed so far, both Miss Odette and the Traveler can be trusted. To be honest, I didn't get a wink of sleep last night. I couldn't help but think I was the target. So I heard the Traveler and Lelik chatting, but otherwise I don't recall hearing. Me too. I didn't want to wake everyone up, so I was concentrating hard. Then,
What could possibly be causing this? Once was bad and I worked closely with Rampana and Coolish for so long. I never... Florianitsa... 4 victims in just 2 days, and we still don't have a single lead. I need to get to the bottom of this as soon as possible. And above all, keep Tonya safe. I'd never be able to look Child in the eye again otherwise. वाह ये क्या क्या चालू किया ये मैं मुझे वो वाला म्यूजिक चाहिए टे 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 Yes, I just checked. Still no sign of anyone outside either. So we only have ourselves to rely on. If you ask me, this killer can clearly strike whenever they please. The Night Watch was a useless endeavor from the नहीं start. मिलेगा I think वो Lelik must be an expert Among Us in theme. poisoning. Clearly she used some poison that can't be detected on the corpse. Here we go again. Listen, I was already thinking to myself last night, was Lelik's reason for revealing her identity the real story? Well, now I have my answer. It most certainly was not. She's been playing us for fools. You get off on this, don't you? Revealing your identity, only to carry on with your killing spree? That's a hideous thought. हर जगह सेम ही साउंड मिल रहा है मुझे Like yours could dream up. How dare you? That's enough. Yesterday, you named Lelik as a suspect because the victims were both wealthy, but today's victims were just ordinary people. Not to mention that they were colleagues of Odette and mine. What reason would she have? Who knows? Maybe you don't know her as well as you think. ना मिलेगा मुझे वो वाला I सॉन्ग implore you all to ask Mission yourselves, Impossible how theme many people... Lelik is well known to be a ruthless operator, and now she has revealed her identity. How could it be any more obvious? Everything you've said so far is still just conjecture, which doesn't constitute a concrete lead. You need to back up your claims with... How can you defend her, officer? What did she say to you while you were on night watch? Maybe I shouldn't be so surprised. You mill it all so you can get your grubby paws on our hard-earned fortunes. Then tell us to fall in line. Don't you dare! Sir, but you were the one who told us not to stop other people from expressing their opinions yesterday. 4 people have already died. Only yesterday I was chatting with Mr. Coolish. Then we woke up in the morning and he's turning against one another is the last thing we should be doing right now. ये कौन मुझे डीएम कर रहा है Little girl. Even if Mr. Chuganov is a puffed up pig-headed windbag who doesn't have a clue what he's talking about. ये He's still one of the victims here, isn't he? Quite. I had no intention of resorting to violence. But you're right, Miss Tonya.
I ought not prevent him from speaking his mind. In any case, I believe Mr. Chuganov has calmed... I don't think there's any need for that. What is there to discuss? Nothing about this situation is normal. Did you have an idea, Mitya? You're the brainiac here, right? Come on, clue us in. I've been mulling something over. All the leads we have so far concern things from outside the theater. But then there's the 2 double murder crime scenes themselves, which have given us absolutely nothing to go on whatsoever. That's highly unusual. Even with the most careful killers, there's always some evidence left behind. Welcome, Royal भाई. स्ट्रीम में रिएक्शन देखने आते हैं. अगर सब स्पॉइलर पहले से मिला हुआ तो क्या फायदा? तुम गलत स्ट्रीमर के पास आ गए योरिची भाई. It isn't characteristic of human-on-human homicide at all. Correct me if I'm wrong, but aren't you supposed to be a scientist? That doesn't sound like a conclusion someone like you is supposed to make. I got into scientific research because of my insatiable curiosity. But if the present situation defies all non-scientific explanations, I don't... Now that you mention it, I remember when I first came to the theater. I heard rumors about this place haunted. Yeah, I think I heard the same thing. But I mean, they're only rumors, right? Well, this has taken an unexpected turn. A haunted theater? If Paimon were here, she'd probably be hiding behind... Why don't we take this opportunity to look for clues again with a more open mind? Maybe a different perspective will help us see something different. Very well. Whether it's criminals or ghosts we're looking for, the same rules apply. Everyone needs to tread carefully. I'll move... कब तक करना पड़ेगा ये? Valeri, come take a look at this. You too, traveler. Some sort of notebook. What is it for? It's the on-duty logbook for the theater. Kulish was the main person to use it. He mostly used it to record any unusual incidents during a show, audience numbers, exit times, and so on. Yes, he'd always have this logbook with him when he checked tickets at the entrance. This should confirm a lot of key details about the recent show. So, you find anything unusual? Yes. The number of people. I've checked and double-checked, but the numbers just don't match what's recorded in the logbook. Apparently, we have an extra person among us. Are we certain that logbook is accurate? Could someone have sneaked in without buying a ticket or something?
Unlikely. Coolish took his duties very seriously. I've rarely seen any errors in his work. Not to mention that this was a dress rehearsal, meaning smaller audience numbers and tighter ticket restrictions than usual. Everything would have been well within his control. We no longer have our tickets with us, do we? They got collected on entry. I assume there's no way we can check them again. Unfortunately not. The theater recycles tickets. Once people are in the door, they don't tend to leave until the show ends. So we collect the tickets at the point of entry. Still, I'm inclined to believe that this discrepancy in the head count is significant somehow. Did an extra person just materialize out of thin air? Commentary, please. Welcome, Devil Bhai. Ah, Traveler. Since you're here, come take a look at this. Alosha found it. We're both curious to hear your perspective. It appears to be a, well, an... An investigation report, huh? Looks quite old. This person's name looks to be of Sumeru origin to me. Was the investigator from Sumeru? The theater manager must have hired an investigator once specifically to look into this So- issue.
वेलकम Doesn't वैसे look like anyone ever looked at the टेबल भाई, वो report. मैं थोड़ा Presumably, कुछ anyway, और the जगह bottom line is देख रहा था, इसलिए We चैट नहीं learn देख पा रहा था। it's hard to some of the language that ये my पॉइंट का area of क्या research करूँ? doesn't touch. Huh? रिडीम में A piece काम of आता paper just है, fell out from the गैम्बल report. करने में It काम landed आता है। right by your feet. How unnerving. It was tucked inside the report. क्या So रेडियो it के जो तुम्हें is स्क्रीन near. में देखना है वही। But if so, how did the author सारे foresee it? रिडीम्स के नाम Could he predict डिस्क्रिप्शन the में future है। somehow? Maybe things are more complicated than we thought. No, wait a second. If we take the report and the note at face value, they completely the report definitively concludes that the hauntings in the theater are harmless and cannot affect the real world. But the note seems to be the question is, what exactly does the note mean by death? The various ways we could interpret this keyword lead in completely different directions. Let's pause our analysis here for now. I think we need more information. रिडीम हुआ नहीं। सैटेलाइट Tonya, did you find? Not yet. Still looking. So, are we, कॉलम में स्पेलिंग गलत है। are we supposed to be looking for something? This looks like somebody's note. Well, it doesn't look scary or anything. So I guess it should be fine. Alright, let's read it together. ये कट सीन तो खत्म ही नहीं हो रहा यार। Huh. This has to be Vodianitsa's writing, surely. Maybe it's a little rude for us to peek at this. I think रिडीम में कुछ गड़बड़ हो गया है। Someone's secret. It sounds like she's because her water imp parents belong to the aristocracy, who were driven out of Snezhna. We're sorry. It's fine. All right. Give me my notebook back. I'll take over the investigation in this room. कौन चिल्ला रही थी ये? अच्छा वो दिया नहीं सर। If we take all this together, it's not impossible, is it? If anything, it's the natural conclusion. Well, I beg to differ. This sounds to me like a product of a researcher's vivid imagination. And perhaps it's because I'm still viewing this through the lens of a typical. वो सच में सबके सामने बहुत काम But रहती है। still, Does it really sound that far-fetched? Typical psycho behavior. Let's treat that as speculation for now. I do agree with what you've said, so let's go with your idea for now. good. Okay, now that we finally have some meaningful leads, I think it's time to reconvene. Let's get the... La 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 la. La 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 la. La 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 la. So, that's about everything we've discovered so far. I'll share my theory first. Based on what we've learned from the logbook, I believe if the killer had simply bought a ticket, it would have greatly... I expect he or she either hid in the theater... Among Us खेल रहे spoiler do. ...or found a way to slip nah, past जाने दो यार. What about the note found in the investigation report? इतने end में आके That fits in? मन नहीं कर रहा.
स्पॉइलर The लेने का। killer may have simply planted it there as some sort of sick joke. I've seen my fair share of psychopathic killers. They love playing cryptic mind games. So, it has nothing to do with the haunting of the theater after all. This theory makes sense to me. If we have an audience member unaccounted for, chances are they didn't come here to watch the show. Could it really be कुड़कुड़े that खाते हैं बैठ simple? के। रिक्वेस्ट करो और कुड़कुड़े खाते खाओ। So, in other words, all we have to do is find out who got in here without a ticket, तुम्हें and all our मिजुकी problems के will be कितने solved. कौन से C1? साउंड तो बहुत आ रहा है। थोड़ा दूर रखता हूँ माइक को। फिर भी आ रहा है। Then let me make one thing clear. All the theater staff should be well aware that I came इतना here for दूर the है तो? rehearsal legitimately. Yes? There's no way I'm the one who didn't have a ticket. यो 20 रुपीज। धन्यवाद धन्यवाद डेविल भाई, धन्यवाद। It's true. I hear you used every trick in the book to get a hold of that ticket, too. Everything sure... I most certainly did not degrade myself in मैं such a सोच रहा way. हूँ सिलेक्टेड से Probably a stupid question. लूँ या ना, I might as क्योंकि well ask. Did anyone here get in without having... सोच रहा था कॉन्सलेशन सिलेक्टेड में मिजुकी लूंगा, बट तब तक बहुत लेट हो जाएगा। इस वाले सिलेक्टेड पे मोना C4 कर दूं सोच रहा था। Guess it was naive of me to expect them to just admit to it. बात है Especially after the unprompted Lelic reveal. Once was already a miracle. मैं ऑलरेडी एक बार Twice मोना would be unfathomable. कॉन्सलेशन सिलेक्टेड से ले चुका था। We have to catch this extra... As things stand, The most likely extra poison who entered. as things stand. Sounds like Chuganov. I हैं don't believe any of us here knew Shram before all this. If no one... वोदेनित्सा मिजुकी टीम में। Did you really go... Huh? Me? Why am I being singled out, my friend? Do I seem that suspicious? It's not that you stand out as suspicious, more that everyone else has been ruled out as trustworthy. Okay. Well, we spent the best part of 2 days together now, so I'm sure you can all tell what kind of person I am. I'm a true gentleman. I never dream of doing something like sneaking to the theater without a ticket. बहुत जोर से स्पॉइलर देने का मन कर रहा है। तुम मुझे डिस्कॉर्ड में स्पॉइलर दे दो, डीएम करके, देन बाद में देख लूंगा। No doubt that you're a good person. But the problem is, none of us here actually know you, so
No one can say for sure that you are who you claim to be. तुम एक काम करना डेविल भाई, तुम मुझे क्वेस्ट के बाद ही स्पॉइलर दे देना, तब भी मेरे लिए स्पॉइलर ही बनेगा क्योंकि मैं ये क्वेस्ट पे ज्यादा देख नहीं रहा. You're friends with that water imp, which is why you understand our primary mode of expression. Last time I checked, there were barely any of us remaining in Snezhnaya, since most of the... And I suppose it's also kind of a way for everyone... Good grief. Are you blushing? इतने धीरे धीरे करो वो भी बिना देखे. ओ एक्चुअली मैं गेम में ध्यान ही नहीं है, मेरा ध्यान है भी कुरकुरे खाने में. Because sparks began to fly between me and their daughter. We don't need details. Just get to the point. Okay. I'm just a little hesitant to reveal her name, that's all. You know, even with me to protect her. If word gets out that she's... Really? Wait, no. Huh? Shram, what the devil are you talking about? Why is everyone looking at me like that? Surely you can understand where I'm coming from. Delicate times. Factions? Yes. You know, the Civil War. Last time I checked... If I'm not mistaken, the last significant civil war in Snezhnaya history was over 400 years ago, when Her Majesty the Tsaritsa had just taken the throne and was consolidating her reign. What do you mean, 400 years ago? What's going on here? Is Shram from the past? All right, Mr. Alyosha पे भरोसा मत करो. As far-fetched as Eh? it is, I'm just as amazed as you are. I didn't even believe it myself, to be honest. Is someone going to explain what's going on here? From the look on your face, you figured it out too, haven't you, Traveler? The theater's ley line, Mr. Shram's, and according to the this is Mr. Valer. For some unknown, yeah, that. बहुत क्वेस्ट बाकी है. Since we discovered that Mr. Shram is from all of last night, Lelik. The contents of the death is near. Yeah, the logic is clear now. The investigation report said that there would be souls stuck wandering around the theater because the ley lines were cut off. Mr. Shram must be one such soul who died in the theater a long time ago. So when the note said death is near, it must have been referring to death as it... Someone who died a long time ago. In short, there's a dead person among us. The extra person we've been searching for is a ghost from the past. You mean I'm a ghost? No. Don't make jokes like that, my man. There must be some mistake. But even if I was dead, I know for a fact I didn't kill anyone these past 2 nights.
Yeah. Even if all that's true, the report also said the souls inside the theater can't affect reality, right? They're harmless. Then what if the problem isn't the souls at all, but the ley lines themselves? The ley lines have a powerful ability to attract and devour souls. Let's say that the ley lines are like a black hole, constantly seeking to engulf souls. But the souls that don't want to return are... Huh. Why does this analogy sound so familiar? What happens when the black hole can't achieve its goal? I'm only speculating here, but what if it ended up swallowing innocent souls by mistake? Or intentionally taking other souls to compensate? That could explain why we weren't able to मित्रवा determine a cause of death. If you're right, and their souls were devoured by the ley lines, it does make some sense. It does seem to explain a lot of the things we couldn't make sense of. Does that mean it's true? Except there's no concrete evidence. Mitya is relying on a lot of logical leaps. Still, it seems like the best explanation we have under the circumstances. Alright, so how could Shram not know that he's dead? Seems a little unlikely that he hasn't noticed. On the contrary, it's perfectly normal for a soul to wander the theater. काफी टाइम लग जाएगा ओके I'm trying to remember. I was the one who didn't want to remember my own. Well, I'm sure those are painful memories. My lady and I snuck. All of a sudden, a group of people burst into the theater, shouting for all the water imps to get out. Performers and audience members included. It was clear the conflict between humans and Fae had reached a boil. I thought I could pull one over on them. So I took off my jacket, draped it over my lady, and tried to sneak out amid the chaos. But I got caught. They started, but I was going to do whatever it took to buy our chance to escape. No matter how many people stood in my way. I had to. Both as their bodyguard. And out of love. It's all right, friend. You can stop there if you want. You don't need to dig all... It's just... If I'd known I was a dead man walking, I wouldn't have dragged you down with me. But, Mr. Shram... No. I refuse to be a burden. I know what I have to do. You said I've been wandering the theater for centuries, right? Mr. Shram, I'm sure we... My good sir. We both know I'm not supposed to be here. No. I'm speaking on a personal level this time. Let it go, man. Just imagine कोई इसको अगर बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? One last thing. शर्म से मेरा नाम है. My lover. Her name... Ozarova. Oh, Auntie Ozarova. That's what we all called her. Auntie lover. Very kind elder. She had a bunch of kids too. I'm so glad मेरे she lover का survived. शादी हो गया. Did बच्चे you हो have lots गए. of kids? Good. That's good. I could hardly expect her अब to से stay इसका single वीरन just because स्टार्ट of what हुआ. happened to me. अब जाएगा ये जिम. As long as she went on to be happy, that's all that matters. Besides, I'm dead. My soul has been wandering around here for so long because I was worried about her. शर्म की जीभ थी वो आंटी. There's no need to see me off, my friends. I've enjoyed our time together over these past जिम few जा रहा है ये days. अभी. Perhaps बॉडी we'll meet बनाएगा. again in the next life. एक गाना तो बनता है इसके लिए. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. Take care. हे हे ओ हे हे. Mr. Shram is already dead, but Death is cruel, no matter how we might try to make sense of it.
चिप्स खाओ। Even historical records about that time period don't say much about it. All people know is that the Tsaritsa founded the Fatui, drove out most of the Fey aristocracy without explanation, then used her काफी अच्छा गाया, terrifying power to धन्यवाद suppress the humans. धन्यवाद। ये गाना मेरा ही था, मैंने इस गाने को उसको दिया था गाने के लिए। It seems to me like the Tsaritsa chose to make herself the वो enemy. She downplayed the conflict, directing whatever animosity both sides had for each other at क्या नाम था herself इसका? instead. हाँ, आतिफ असलम मेरे घर आया था एक बार, तो उसको ये गाना सुनाया था मैंने, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि ये गाना मैं अपने एल्बम में डाल दूं। देन थोड़ी और बातचीत हुई, तो देन हाँ बोल दिया मैंने। That's also why, despite how brutal the conflict, So, the Tsaritsa banished. maybe it's ओके, not मैं quite अभी as जा bad रहा हूँ, as it थोड़ी देर बाद sounds. आऊंगा। I don't ओके, think Her Majesty is too concerned if mortals hate her or not. All this time, वैसे I थोड़ी देर had बाद no स्ट्रीम भी बंद idea. होगा। All right. If Mitya's theory is correct, then I think we can consider this matter settled. फिर एक Let's all पेलिकन के take लिए a सॉन्ग दे break. दिया। ये तो सीक्रेट डील थी, तुम्हें कैसे पता चला? Ugh, if only this blasted storm wasn't still... सब पता है। अच्छा, मेरा कुड़कुड़ खत्म हो गया। Looks like now we can just rest until the snowstorm stops. I still can't believe. Knock knock. 22 रुपए का Huh? कुरकुरे खा गया मैं। Knock knock. You know the door isn't closed, right? You don't have to knock. ओरिएट यहाँ पे कुछ नॉक नॉक मीम बोलना चाह रहा था, ये बीके ट्रैवलर ने उसका जोक खराब कर दिया। कौन सा ब्रांड का है ये? एक्चुअली कुरकुरे तो था नहीं, ये था 2EM का दही पापड़ी चाट वाला फ्लेवर। तो इंस्टामार्ट से 35 रुपए वाला पैकेट 22 रुपए में बेच रहे थे, तो 2-4 उठा लिया। अच्छा, नॉक नॉक इसका कोड वर्ड है। Think of it as a signal then. When I'm entering someone else's room and I knock, I'm here as Odette. If I don't knock, it's Lelek. Thanks. So, 22 रुपए में why कौन did you सा come to find me? ब्रांड आ Is गया? there something I can help अरे with? धत्तेरी, बोला तो 2EM था ये। 35 रुपए वाला पैकेट 22 रुपए में मिल गया। ऑफर पे। Vodyanitsa said you, but when everyone was discussing, yes, I'm extremely grateful. It's 2-3 दिन की I अर्निंग mean, चली गई the whole कुरकुरे में। crap- अरे ना। Actually, there's something else as well. I found myself in a situation similar to the one you were in when you helped so I thought I'd come and ask you for it. It's about me before all of this. The last time I saw him, 2 PM वहां पर 20 रुपए का मिलता है। 2 PM क्या? 2 PM यहाँ पर समझा नहीं क्या? as I'm sure you know, my goal as Lelek was to stop Project Stygian.
अच्छा 2 बोल रहे हो अच्छा. Well, when I found out the tech lead for the experiment behind Project Stygia was Mitya, I immediately started planning to track him 2 down and 2 threaten him अरे to back PM out. नहीं बोलता 2 बोलता है. YUM. I often saw him around the theater, but I soon concluded that making my move Do there you would risk ever exposing my try identity. सोयाबीन का मतलब like So सोया I चंक्स decided to वही. infiltrate the Armory Palace and go direct. मैंने तो वही खाया है. But when I finally made it to his lab, अच्छा यहाँ 2 Mitya PM seemed मिलता to है. be. क्या बात कर I रहे हो? checked his breathing. I thought maybe another anti-prod. That's why you were so on यार guard हमारे यहाँ around पे Mitya that Amazon first night वालों here. भी like 10 minute 15 minute डिलीवरी चालू कर दिया. Yes. When I saw him sitting in the audience during the performance, I could barely contain the shock. इन सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे. Instamart, Blinkit, Flipkart Minutes, Amazon का भी वो सब चालू है. सिर्फ Zepto To नहीं चलता. me, it was a miracle. Somehow he'd come back कौन सी from the सिटी में? dead. मैं तो But कोलकाता then, में रहता हूँ. the murder started happening. That is, until Mitya himself said there must be a dead person Exact among us. डाउनटाउन कोलकाता नहीं. Then I couldn't ignore it any longer. 10-15 किलोमीटर दूर सिर्फ. अच्छा वो स्पाइसी कुरकुरे होता है नेपाल में मिलता. अच्छा. And yet, you thought that bringing it up right away would single Mitya out. My Just dear, like when you everyone don't was have suspecting anything. Lelik. You have to buy yourself with local store. Exactly. Besides, But now, it seems like there's another candidate. कैमो नाच. कैमो कैमो. अच्छा ये कैमो नाच है लिखा है. अरे वो तुमने मिस्टेक कर दी. वो एन जो होता है वो फर्स्ट में है कैमोन. उसके बाद ACH लिखता है. लाइक वो नाचे नहीं होता वो I आछे. understand why. so Let me around a week. A week ago. और he आछे भी seemed नहीं लिखता वो completely आछो normal होगा to ना. me. कैमोन Chatting आछो. with Vodi. So Here's a thought. But उसका Mitya's मतलब death कैसे हो? happened inside the Armory Palace. वो दिन The इस ley सब lines कर affecting टीम the को भी theater बफ कर shouldn't रही reach है. that far. वो तो पहले भी तो कर रही थी ना. मैं क्या थोड़ा ज्यादा करेगी. you're right. I guess he doesn't fit the profile of the person we were searching for. I think the chances, Unless what? unless he really did come back from the dead. You're right. Huh, what's this? A private meet and greet? हेलो. खावा दावा खाए गलो. ठीक से तो सुनने में बहुत मजा आ रहा है ये. Where do I line up? भाई गलो ये इसका मीनिंग पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो. That's not what's going on here. वेस्ना का सिग्नेचर यूनिवर्स. एक तो पैसिव बता मुझे उसका. हर कोई आके बोल रहा है ये है वो है. पैसिव किसी को नहीं पता. Well, I was just making the rounds. Thought I'd try to lighten the mood a एक bit. तो कौन सा वेपन Denise टाइप is है handing वो out भी food नहीं if you're पता hungry. मुझे. यहाँ ये मेरा क्वेस्ट खत्म होगा कभी. स्वॉर्ड है. Have you ate food? हाँ. What is going on with this storm? Could it be connected to that monster that just arrived in Snezhnaya? चल एक तुमने एक ठीक से लिखा नहीं एक्चुअली इसको. I almost hope it is. Her Majesty the Tsaritsa left to vanquish that beast herself. उसको ऐसे We लिखते just need to खावा wait दावा for her होलो. triumphant return. HOLO. उसका मतलब है हो गया. Do you think इतने प्रीमोस है मेरे पास. still feel the cold after they 7-8 हजार die? I think. I'm Death itself Triggering is cold, isn't it? I'm sure the storm will embrace him. sequentially. When an element skill burst used to increase crit damage by 48. Well, I hope he has a safe journey. I'm going to miss him, I think. It's not like we can blame him for Increase Rampana Terra's and world reaction Felicia's damage by deaths. 28. इतना cracked weapon कैसे हो सकता है? What? Thinking back on it, we barely made it out alive ourselves. 48 का damage? Once we get out of here, क्या बात कर रहे हो? how are we going to explain what
48 CD and ERB regeneration, swirl reaction damage भी extra. Skill alert, इतना easy. ये तो मेरे बाकी सारे वेपन पे इसने तो I've never used it. मूत्र विसर्जन कर दिया. Look who's Mr. Nice Guy all बुलेट of a के दे दूं sudden. क्या? पहले निकाले Is it वेपन because में. Tonya stood up for you this morning? तुम्हें अकेला पे वो नहीं At मिलेगा. least you know टेम्पेस्ट how to चिंता मत return- करो. Yeah, without Tonya, who knows how badly he... I told you already. सब स्किप कर दूंगा मैं. Little girl, Oh, no. I've been. पूरे शेज़ना में मैंने सिर्फ एक ऑडिट निकाली है अभी तक. You remind me a lot of my daughter. यार 10 पुल मुश्किल से इनेफा के लिए बचा है. जैसे ही 160 किसी तरह से होता है तुरंत कर देता है. So kind to everyone, but never lets her old man off the hook. Unless my wife, especially when she was little. All right. easy now. How long have you had that cough, Tonya? मैंने भी ऑडिट निकाली. देखो अगर मुझे वेस्ना टीम बनानी है तो मुझे वो दिया नहीं अभी निकालनी पड़ेगी. दोनों तो मुझे मिलेंगे नहीं तो दोनों स्किप करना पड़ेगा. Yeah, I'll be fine once I see my brother. He's good. I see. That's good to hear then. We should probably discuss. However, out of an abundance of... Shouldn't we take shifts? I can take one if need. No need. I managed to get a nap in वो earlier, इतनी so सके I have बिना plenty of energy right now. 171 DPS मार देगी. After all the वीरन tension पर of the past few देख days, लियो. everyone else should just focus on getting a good night's sleep. R1 चाहिए. एक तो R1 के लिए तो 150 पुल चले जाएंगे मेरे. माविका के R1 निकालने के लिए 140 पुल चले गए थे मेरे. This whole situation turned out to be way 140 more नहीं. complicated than I expected. हाँ 140 से ज़्यादा है एक्चुअली. But 140 से Valera's ज़्यादा right. नहीं. I should just try to calm down and get some rest. The last thing I want. 135 के आसपास. He's awake. He's If you must call me something, call me... Are you all right? Can you walk? We just got attacked by monster. He just यार seemed ये to come सीन out of- खत्म ही नहीं हो रहा है यार. ने प्रो भी हो गया अभी भी चैट में. Mr. Door, I don't believe यार I've एक ever मैच seen you खेलनी around थी here तुम्हारे before. साथ वो फुटबॉल. There's no need Good to job. try to get to know me. I'm just Mr. Door. I have to find the door that belongs to me. Oh, well, anyway, we're lucky to have you here. Thanks for वो saving वो us. वो वो वो. No need to thank me. This is where my duty lies. तभी ना हो रहा. कहीं अभी काफी दूर है एंडिंग से. Mr. Door, I'm looking for trouble. Get rid of them. I can just push these ones off. Just you wait. एक न्यू गाचा वो आ रही है 4 स्टार में. बोल रहे बहुत अच्छा है. एनिमीज को खाई में फेंको. देखा था 20 मिलियन डैमेज आया था. So we're doing this the hard way. Just you. Remarkable work, Mr. Door. If I had your muscles, I'd do the same. भाई वो दिया पुल कर रहे हो क्या?
फिलहाल नो आइडिया, अभी तक प्लान नहीं किया। स्कर्क और फ्लिंस बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। Are none of these doors the one you're looking for? No. दोनों का ही नाम गलत लिखा है इसने। अब जो निकालूंगा सरिसा के बाद निकालूंगा। क्या निकालने की बात हो रही है यहाँ पे? ये क्या हो गया? हील हो गया। New character. I'm so exhausted. And the black mist Good is night, still Machela. Bye bye. Oh. Wait, look! There's more monsters down there. Are they coming from within the black mist? No, no! They're gaining on us. Quick, keep going, or they'll be at our heels any second. भाग ठीक है बोस, ठीक है बोस, ठीक है भाग भाग भाग, ठीक है बोस, ठीक है भाग भाग भाग। Found it. This is my. What? This is. You mean you're going to stay here? I am a door. This is where my duty lies. मैं एक दरवाजा हूँ। No, you saved us. We can't leave you behind. You must keep going. A door can only keep things out. But तुम पे तो ज़िबाई भी नहीं है। नेक्स्ट फेयरलेस कैसे करोगे? दोस्त चला पहुंचाएगा। नेफर है तो एक को नेफर से पेल दूंगा। Let's go. एक स्कर्क से पेल दूंगा। The black mist isn't moving anymore. एक मैं सोलो मावे का कर दूंगा। The monster's end? I didn't just imagine all that, did I? Surely I wasn't so scared out of my mind that I hallucinated a door as a human being. Oh, okay, good. Getting sleep? क्रायो शील्ड है थर्ड वाला। क्रायो शील्ड माविका से पेल दूंगा। What time is it? Is it morning? I think I had a nightmare. I guess everyone's still asleep? खत्म होगा। एक सीन के अंदर ही चल रहा है ना, बोर्ड लग रहा है यार। चले जाते हैं यहाँ से, टाइम वेस्ट होगा। फिर थोड़ा घूम जाते हैं। चार्ट मैं तो ज़िबायन लिनिया बजा रहा हूँ। गुड लक। लगता है इंसेप्शन मूवी देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा ये भी टपक गया। Just like the last 2 nights. No clear cause of death. मर ही गया यार ये। Haven't I? But for me, life will be all the duller for not having to run away from you, my friend. क्या इसके बाल के कलर सफेद है या फिर पक गए? How's Tonya? Is she okay? I just checked on her, and it doesn't seem like anything serious. She's just exhausted from the past couple of days, and she's still recovering from next her illness. Or we should let her sleep a bit next longer. best value for spin. Value for spin. That means Valeri was the only one who died. If value तो है। Next season लोबे लगने वाले हैं।
This is so frustrating. Why has nothing Actually, one thing has. ओह ये सब चीजें यार, After the deceit, it's ये a quest reasonable. बहुत बोर लग रहा है मुझे। The number of people who die. Exactly. I mean boring है नहीं, Having an extra person. One more dead but person. मैं चाहता हूँ among खत्म हो us. जाए ये। If Mitya's theory is right, then what Odette told me seems a lot more relevant. It's just, at the time, we had... If only we'd taken it more seriously as a possibility. I'm sorry. सिक्स स्टिकर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इस क्वेस्ट से बचना चाहता हूँ। But I held back. I'm partly to blame as well. I was too quick to dismiss Odette's concerns. What is this about? What have you two... Sounds like there's some big news you've been keeping from the rest of us. I'm the dead person? इसके आँखों में वाइब्रेटर है। Wow. That's certainly news to me. Odette and I talked about it yesterday, but we thought it just wasn't possible, so we left it at that. Yeah, I don't blame you. If I'd been there, I probably would have reached the same conclusion. Let me just try and verify this. I just scoured my... But I honestly have no recollection of dying. यहाँ पे एक बंदा मरा पड़ा है, यहाँ पे ये लोग चिल कर रहे हैं। Having seen Mr. Mitya a few days ago myself... Well, if it isn't Mitya, then who? Do we vote on it? If you don't mind me asking, Traveler, I believe you mentioned that you know Tonya's brother. Had you... No, never. Now just one. You're in the hot seat. Trying to pick a fight? You! Did Mitya ask? I suppose... I can vouch. Oh, really? Since being... I think he cut... Like ये... Miss Odette. स्किप करने वाला ना चीज थोड़ा फास्ट हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पहले थोड़ा ज्यादा टाइम लेता था, लाइक एक डायलॉग फास्ट फॉरवर्ड करने में, अभी कम टाइम लेता है। Miss Vojanitsa. Oh. Right. हाँ यार सच में। स्किप कर, मुझे नहीं जानना क्वेस्ट, मुझे सिर्फ अपने ऑडिट को लेवल अप करना है। You mean the researchers? I must thank you, Odette. स्टोरी तुम बता दो स्लेड भाई। Come on, kid. I have other reasons. I remember during Miss... I can't remember it. No, there's a glaring... I believe Miss all it would take... There's no evidence to... Please relax. If... हाँ यार सच में थोड़ा फास्ट है ये। With this snowstorm... But if I do get resurrected, you can be sure that I'll come back with a... Hey, achievement! Let's go! Let's go! Welcome, Eduardo. Welcome. You are the skip man. Maybe it's a... नाम अच्छा है तो? Hey, goodbye. Maybe it's the realization that, at the end of come to think of it, the main reason we're still alive right now is pure luck. You could take it. If I make it out of here, I'm going to क्या cherish करेगा इतने every बिल्ड moment करके that I'm डायर तो awake. होगा नहीं एंड डायर भी करेगा तो क्या ही मिलेगा? Without, I feel... Are you okay? If something's कोई bugging वैल्यू ही you, नहीं इस चैट let's में। talk about it. There's only a few of us left here now. I have a travel companion named Paimon. You're worried about... To be honest... यानी रिव्यू में होता हो हाँ she loves over the last few... किसी एक का तो हो But by the time I snap out of it, क्या बोलना I'm trying to over... I don't know if this will make you... I could be surrounded by people, all smiling and having fun. Later on, I started to think... Maybe इससे बेटर तो अच्छे से टाइम लेके क्वेस्ट कर ले। So, once we get out of here, you यार better hurry back to मुझे तो कुछ महीने पहले पता चला था कि नोसिस नाम का भी कुछ चीज होता है। Thank you. तो मुझसे क्वेस्ट के बारे में कुछ मत पूछो। 4 साल, 4.5 साल से खेल रहा हूँ, ये सब नहीं पता था। लेकिन 2-3 महीने पहले पता चला तो ओ अच्छा नोसिस भी कुछ होता है। समझ रहे हो? ऐसा हाल है मेरा। Our songs have echoed through this theater. मुझे तो पता ही नहीं था कि वो without someone to read it? सारे The answer is लाइक no. क्या बोलते हैं उसे, सरिता ही नोसिस कलेक्ट कर रहा था। ये कुछ दिन पहले पता चला था किसी के वीडियो देख के।
So I made the choice. Could you? ये लास्ट टाइम है बिकॉज नेक्स्ट डे बहुत कुछ होने वाला है. अनइंस्टॉल कर दे गेंशिन. नॉट फॉर यू. ये मुझे कोई ऐसा इंसान बोला जिसका फेयरलेस भी नहीं हो पा रहा. बीजी की बिल्ड कर ले ढंग से. नेक्स्ट सीजन में लोग लगेंगे. नेक्स्ट सीजन आने में बहुत टाइम है. तब तक तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा. I've actually never performed this song in the theater before because it has more of a. It means something like, "May those we have lost watch over us and follow this." No wonder I could hear that sense of longing. You sing it for. It's getting late, Tonya, and you're not well. Okay, but of course, anything for my number one. फेयरलेस तो मैं कर लूंगा आफ्टर विदिन 1 वीक. वेट एंड वॉच. ओ माय गॉड. ओ माय गॉड. फेयरलेस कर लोगे शेयर भाई. ओ माय गॉड. मैं तो ये सुन के लाइक ये हाथ पैर कांपने लगी है सुनने के बाद. Once I get out of here, I definitely लैपटॉप ले लिया. क्या बात टोटरो. अब लैपटॉप से सुपर चैट करोगे तुम. But I guess that means I'll never get to hear before I fall. तो ये बताइए क्वेस्ट पे क्या बोला. तो वही तो मैं लोगों को बोलता हूँ ना मुझे बोलने के लिए. अरे चैट में से उतारे नो कोई ना यार. स्टोरी प्लेयर वर्सेस कॉम्बैट प्लेयर. मैं तो सबको बोलता हूँ कि मुझे बताओ स्टोरी के बारे में. बताते तो हो नहीं. What was that noise? 65K में मैकबुक न्यू 8512 GB. 8512 में काम हो जाएगा. Return, O spirits, fulfill your oath of protection. स्टूडेंट हो जाएगा. देखो स्टूडेंट हो क्या तुम स्टूडेंट वाले काम करोगे उसमें. सिर्फ बताना. I'm a lot. No time for questions. Quick, over here. All right, we're safe. The spirit just now is called Night Prayer. अगर ये सरकार खानरिया में नहीं तो Let this place go dark. चीनी. We should kill you again. Yep. Look. A bit more. Sure I do. I'm your guardian. I specialize. Thanks. All right. क्वेस्ट कर लेता फिर बोलेगा कंटेंट नहीं है. कंटेंट यार देखो मैं एक तो जब मैं क्वेस्ट करता हूँ लोग देखते नहीं. अब अभी अगर मैं किसी का स्टीजियन लेके मारपीट करता इससे डबल वॉचिंग आती मेरी. अरे वेलकम अभिरावत. स्टूडेंट का क्या काम. सीएस लिया हूँ तो कोडिंग प्लस गेंशिन खेलूंगा. एंड आईपैड 10th भी है. सो एप्पल इकोसिस्टम पे आईपैड को सेकंड स्क्रीन यूज करूँ. बाप रे महंगाई. एक मेंबरशिप ले लेते टोटरो भाई. खुश हो जाता मैं. It's night prayer. We need to move quick, but don't let her notice you. बाय द वे ट्विच आगे ट्राई क्यों नहीं करता. मेरे हिसाब से एक ही जगह स्ट्रीम पे फोकस करना चाहिए. ये ट्विच
केक सब मोम आया है। $3.5 ओल्ड आईपैड है। अरे तो क्या हुआ, मैकबुक तो नहीं हुआ ना। ओए चल दिया। अच्छा नीचे से जाना है। ओके अरे 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 अच्छा साइड से जा ही नहीं सकते। Arrows here too. This can't be the only ये path. मार देगा मुझे, Let's ये head मार there to देगा। take a look. I won't let you die like this. मम्मी लेने गई Not थी on my रोज watch. गोल्ड, ले दी यार। पोप्पू की लैपटॉप। मुझे ब्लू चाहिए था, लेमन कलर। अरे कोई ना स्किन लगा लो और क्या। अरे यार फिर से आ गया ये। अरे I won't let you अच्छा die like this. ट्रेन के ऊपर से जाना होगा, अगर उसको मार दूं तो। ये ले। अरे नहीं I wasn't meant for this world. Return, O spirits. Fulfill your oath of protection. The switch is just up ahead. Hurry! यहाँ से देख पंग। ना 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 ना। अरे It's too dark. We're not gonna make it. Come on. Traveler! ये बंदा मरने वाला है। I won't let you die like this. मरने वाला Come. काम करता है। Even though it's not permanent, सच में मर गया था कि ये? dying is definitely not a Great. You're back. Yeah, thanks to you. Time for you to get out of here. तो वोडेनिचा ने ट्रैवलर को जिंदा किया, तो अब टेक्निकली ट्रैवलर इसका गुलाम बन गया, सही ना? What about you? You're not coming with me? ने मालिक से ऐसे बात करते हैं? हैं? I can't. I've already been used up. The guardian spirit skills are finite. क्या बोला? वोडेनिचा I ऑलरेडी can यूज हो only चुकी है। resurrect someone. I might not look any different, but my essence has been ट्रुथ को exhausted. कुछ और है, पर मैं तुमको स्पॉइलर नहीं I दूंगा। will I can go no further. The black ड्रीम mist लूप is है, where I धन्यवाद। belong. Why didn't you tell me sooner? Because अच्छा ये it सपने में wouldn't मर have रहा है? अरे changed यार ये anything. तो पूरा इंसेप्शन चल रहा है। That knowledge would But वो देखो कैमरा। go now before it's too late. I already ला 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 ला। जा क्या? Well, I guess there's no need. टपक गई वोडेनिचा। मैं तो टूट गया। एक सबसे बड़ा स्पॉइलर है जो मैं चाहता हूँ तुम खुद देखो। स्पॉइलर मैं खुद देखूं। This wasn't supposed to happen. You lied to us, didn't you, Chuganov? You've been lying from the start. मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, ये ट्रैवलर सबको मार रहा है। आयमन को साइड कर दिया, अब सबको मार रहा है बैठ के। Take a long, hard look at yourself. I suspected. And you little. Now you're just. Where was all this? कंप्लीट स्टोरी करो।
After कंप्लीट all the करो स्टोरी। trauma of Valerian meet, but first. He's arguably the of those who remain, people are easily, but Mr. Chuganov vouched for Tonia's इस identity घर का yesterday. और टाइम कम होगा क्या? पता नहीं। तुम्हारे पास एस्कॉर्फियर पे वेपन है ना? थोड़ा डैमेज ज्यादा मिलेगा Your तुम्हें। brother Ajax. मोना भी I think C4 था ना? I knew you were behind. Everything about you is fake. Down to the wife and daughter you're always talking about. That night, when but thinking back on... Even that was Curses! Oh, why is there no... स्किप मत करो, मुझे खत्म करना है यार ये क्वेस्ट। I know how I ended up here. स्किप नहीं करता अगर मैं स्ट्रीम स्टार्ट से ही अगर सिर्फ क्वेस्ट ही करता तो। At the same time, it's just like it was yesterday. एक स्टीजन और एक एबिस बीच में चालू हो गया। बर्स्ट पे तो 570 के मार रही है। The reason I'm always coughing is because I got sick with frostbite. The locals usually call it the snow cough. It's not a very common illness. It's partly genetic and partly caused by the cold climate. But after a while, I felt myself growing weaker and weaker. Nothing seemed to be working anymore. Neither the treatment that the doctors were giving me, nor the medicine my brother was brewing from frost fairy flower leaves. ये स्किप करते फिर बोलते स्टोरी नहीं समझा। तो बताओ ना मुझे स्टोरी, मैं तो तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ स्टोरी। I wanted him to take me outside for once, so things could be like they used to, just for one day. I wanted to meet loads of friends, experience new things. He agreed. He snuck me out of the hospital, and we escaped. We got to the theater, bought tickets, and went inside. लोग तो मुझे अभी भी नेटलाइन का आर्कन क्वेस्ट का स्पॉइलर देके जाते हैं। हम भी लाइक ये कब हुआ? यही कारण से अपने सब्सक्राइबर से बात खत्म है ये बंदा। यही कारण से अपना सब्सक्राइबर से डांट खाता है ये बंदा। When I woke up, I couldn't find my brother anywhere, so I guessed he'd already left. आर्कन क्वेस्ट से ही पागल हो रहा है तो समझ गया। तो समझ हमें टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? अरे तो तुम लोग तो डेजर्ट लैंग्वेजेस समझाओगे ना? स्टोरी ये है कि टोनिया का डिजाइन चाइल्ड से अच्छा है, बात तो सही है। एग्रीड निशान भाई। ओ मुझे अभी याद है, ये तो चाइल्ड की बहन है, भूल गया था। It turns out I can't blame my brother after all. I'm sorry, everyone. I realized this much too late. Don't give any spoiler. किसने स्पॉइलर दिया? किसी ने स्पॉइलर नहीं दिया। And now I've tracked. Your name probably isn't even Tonya, is it? Didn't that ever strike you as odd over the last few days? इसका नाम है टार्टाग्लियानिया। Well, when I was little, my brother and I read a storybook, and Tonya is the name of one of the characters. When we escaped from the hospital, our family and the hospital security were looking everywhere for us. Let Vodyanitsa and Tonya, किसका डिजाइन अच्छा है? Vodyanitsa का डिजाइन सबसे बेस्ट है यार। approached me and said my brother had sent you, and called me Tonya. वो मर गई, मेरा दिल टूट गया। I thought he must have chosen a fake name that only the two of us would know. सॉरी ठीक से पढ़ो, ये पास्ट बताया तो तुम बताओ ना। No. तुम शॉर्ट में बता दो कि क्या बोल रही है, कि भाई के साथ झगड़ा हुआ था, देन भाई घर छोड़ के चला गया, देन सारों से बात नहीं हुआ, देन फिर रास्ते में दिख गया, यहाँ पे आ गए हम लोग, घर वाले ढूंढ रहे उसको। And yes, I was lying about my family too. The truth of the matter is, I lost them a long time ago. My daughter's name was Iskra.
And मैं before पहले you ask, yes, गारंटीड Iskra भेजना is in निकालूंगा, फिर वो दिनित्सा पे Iskra 50-50 हारा तो manufacturing. सटी से कैप्चरिंग रेडियंस पर मिलेगा। She also died from the snow cough. She was just 6 years old. If she were still alive today, she'd be around the same age as little Tonya here. After Iskra passed, शर्म जैसे ये टोनिया भी लॉस्ट सोल है, ये चाइल्ड का सिस्टर नहीं है। one day when I came home from work and saw the इसको आई थिंक वो कपड़ों की दुकान से खरीद के लेके आया था। Like I couldn't breathe. Subconsciously, I स्लैट started तुम्हारा to तो कोई imagine चैट नहीं that they आया? were still there. अच्छा, मैं अभी लीक देखा स्टीजन का, प्योरली नेक्स्ट सीजन पूरा लेट के ले लेगा, लेट के ले लेगा, फेयरलेस ही फेयरलेस ही ले गया, डायर तो छोड़ दो। Pathetic means of escapism, I know. But at least it's not. So explain your false testimony then. The night before last, when I combined with her, the snow cough used to be, but the year, it turned out that that was the finals. So, more than anyone, तुम लोगों ने तो कर लिया स्टोरी को, तो मैं तो स्किप करूं, तुम लोगों का कुछ एक्सपीरियंस तो खराब होगा नहीं। From an era when snow cough was still a terminal illness. So you projected your daughter onto her, even though रियल में वो लड़की का नाम टोनिया भी नहीं है। That doesn't make any sense. I just हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि उसका नाम टाग्लियानिया है। तूने ये लोकल एजेंट नहीं, मैंने उसको लाइक एक्सपीरियंस नहीं किया अभी। Just declare a living person dead and throw them out into that snowstorm. Nitia's gone. My good buddy Shram's gone. कैसे हो? मैं बढ़िया, वेलकम ओरोन। यार जबरदस्ती क्वेस्ट करवा रहे हैं मुझसे यार ओरोन भाई। Others I can make my peace with, but little Miss Tonya, here she is, standing. मिस टोनिया, ये नाम भी एक अच्छा है अगर एक साथ बोलो तो, मिस टोनिया। And fighting her own battles. Yet you're quite happy to say she's dead? नाइटबॉट का I just want her to live. हो जाता है उसका थोड़ा, कोई बात नहीं करता नाइटबॉट से इसलिए। I'm going to march out that door and find someone who can fetch the very best medicine for her snow cough. I'll be damned if I'm gonna let you cast her out into the snowstorm before I have the chance to cure her. Not again. Not this time. Not when the cure is right within our क्या grasp. सानू भाई, इस न्यू रीजन में मेरा पोको F6 बहुत हीट हो रहा है। बेकार का स्नो स्टॉर्म दे के रखे हैं। पोको F6 8s Gen 3। हीटिंग तो नॉर्मल चीज है, वेदर गर्म होगा तो हीट होगा। Tonya. By the sounds of it, you've known I was dead since the night before last, right? थोड़ा ग्राफिक्स कम करके खेलो और क्या। 45 FPS लो ग्राफिक्स। I really liked Mr. Valeri, Mr. Mitya, and Miss 29.29 मिलियन का एक बॉस है। हम सुना था, कोई बोल रहा था, मुझे लगा था वो बहुत सेल्फ डैमेज खाता होगा, बट बोल रहे कि वो भी नहीं खाता। कुछ तो होगा कि डैमेज खाता होगा। विदाउट कूलर खेलना नहीं चाहता। देखो अगर तुम ज्यादा ग्राफिक्स करके खेलोगे तो गर्म होगा ही होगा। मैं तो तुम्हें सजेशन दूंगा कि ग्राफिक्स ऑलमोस्ट लो कर दो, FPS को 45 रहने दो, अगर मन करे तो ही 60 करो, सारे लो ग्राफिक्स रखो। एंड एक काम कर सकते हो, सिर्फ रेंडरिंग रेजोल्यूशन को मीडियम कर दो, बाकी सारे लो कर दो। मीडियम या फिर हाई से ज्यादा बिल्कुल मत करना, बाकी सारे ग्राफिक्स लो कर दो। एंड शैडो एंड विजुअल को लोएस्ट कर दो। Since the day I escaped that hospital until now, this has been an adventure I never 12 million even dared fearless to का dream HP है। of.
पे 12 मिलियन fearless and dad में 30। ये तो वो I'm very fond of you माविका all. वाले बहुत जैसा कर दिया उन लोगों ने, डायर वाला Beyond ज्यादा मुश्किल। possible, I'd trade my soul to चलो bring अच्छी back बात the है। one. And that's why I'm not fond of you at all, Mr. Chuganov. एक टाइम पे डायर पे 12-13 मिलियन वाला एचपी आता था। सिर्फ रेंडर डिस्टेंस I'm sorry. हाईएस्ट पे है। रेंडर डिस्टेंस बहुत बेकार है, It's वो them that बिल्कुल you मत owe an करो हाईएस्ट। apology to, sir. वो है कि कितनी Not दूर me. की चीजें रेंडर करेगा, वो मत करो, बेकार है वो। उसको लो पे रहने दो, लो या मीडियम, मीडियम से ज्यादा तो करो ही मत, लो पे रहने दो। Well then, I suppose this is it. You're leaving already? मैं बता रहा हूँ, It's still रेंडरिंग early. रेजोल्यूशन को Don't we मीडियम stay रखो या way फिर हाई longer? रखो, सेंटर के 3 ग्राफिक सेटिंग्स को लोएस्ट पे कर दो, एंड My name is Patashka. It was nice meeting you all. एंड वो फिफ्थ वाला रेंडर वाला, उसको चाहो तो मीडियम या फिर मीडियम बेस्ट है मेरे लिए, मैंने टेस्ट किया था, मीडियम सबसे बेस्ट है। Tashka, ऐसा करो, मीडियम लोएस्ट 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 मीडियम, या फिर हाई लोएस्ट 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 मीडियम, ये सेटिंग्स करो 5। What are you doing, Chuganov? Are you crazy? let me leave. I can't. In your dreams. Don't think you're getting off that easy when you had a hand in the deaths of so many people. Self damage, I have tested that on local legend. अरे बात है कि हमेशा जो बॉस ओपन वर्ल्ड में है सेम The Fatui have honed quite an array of enhanced interrogation techniques since फिर they were लाइक founded. सेम स्टीजन पे नहीं Once आता you're ना, out of एक्स्ट्रा here, मैकेनिज्म ऐड करते हैं ये लोग। Melik will personally give you a taste of every last one. रेंडर डिस्टेंस तो मैं सालो भाई उसको अगर मीडियम कर लूँ तो फ्री फायर लगने लगेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा दूर की चीज क्या ही देखोगे तुम। I think we should leave. I doubt this snowstorm is ever going to stop. For all we know, this storm might have destroyed all of Snezhnaya by now. Maybe even the whole world. Wait, we finally... Fair enough. And yet you won't let. Hey, Chug... Is this really the time to be discussing my factory? तो नॉर्मल वर्ल्ड में एक हिट में 22 के प्लस डैमेज मारता है। All right, fine. पीसी वाले फीलिंग मिलता है सारा भाई। रेंडर डिस्टेंस देखो, पीसी वाली फीलिंग तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। पीसी वाला जो ग्राफिक्स अगर तुम्हें एक्सपीरियंस करना है तो तुम्हें वो But I don't क्लाउड पे understand. खेलना पड़ेगा। The snowstorm hasn't stopped, has it? सरप्राइज है। अका 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 Should we open the door? Is this it? Is this nightmare finally over? If the last few days are anything to go by, I probably shouldn't be getting my hopes up. Whatever lies beyond that door at this moment, it could be something even more terrifying than everything we've been through so far. 132 GB पीसी पर। हेल्प करना, ये क्वेस्ट में फंस रहा हूँ। सालों में हेल्प करना, ये क्वेस्ट में फंस रहा हूँ, तो करो ना, क्वेस्ट कंप्लीट कर दो। $132 GB last time I was 125. Hey everyone. ट्विस्ट चालू होगा। How are you doing? Feeling any better?
Much better. ये तो Thanks. पता लगा तुमको कि वो Really लड़की so का good to have you guys here. I was a little फटाशका, worried that the theater would be empty by the time I got back. वो लड़की का फटाशका है. Let me see. Tonya Fujinitsa died last night. Don't skip from here, okay? And then you discovered that Tonya was the other dead person. अरे welcome राजू, छोड़ो, explore करते हैं पूरा, क्या बात? Patashka. First, tell us how you made it back here. Given the conditions outside, no one should be able to return alive. फटाशका नाम है वो लड़की का. अच्छा, ऐसा क्या? You're right. The thing that got me back safely was Stygian का menacing अलग होता है. I heard someone singing. मेरा दोस्त के पास RTX After walking into 5060 the है, उसका snowstorm, medium my mind graphics. grew hazy. मेरा I don't know how long I walked through the मोबाइल से storm before my graphics mind highest completely पे slipped करता away. हूँ तो same लगता है. ऐसा तुम्हें लगता होगा कि but है नहीं. Then suddenly, I heard the sound of singing. कुछ चीजें हैं The voice PC के instantly ग्राफिक्स brought में me जो back to my फोन में है ही senses, and नहीं. I regained consciousness. मान I लो followed the तुम voice, रेत में चलते searching हो, for the source of the singing. तुम्हारे सिर्फ फुटप्रिंट I बनते हैं. searched and searched until finally, just a few moments ago, मारपीट was करते the हो entrance to the तो नहीं theater, बनते. right in front of me. PC में वो भी बनता है. I've actually never performed this song in the theater before, because it has more of a ceremonial purpose for our people. It's not meant for the stage. It means something like, अरे ये जिंदा "Those कैसे who हो have गई? lost Wait, hello? watch over us. ये तो मर गई. Follow this song back home in भूत. the night, so that we might be reunited once more." हाँ, like fog, That reflection, must have हाँ, been ये सब Vodianitsa's फोन में है ही requiem. नहीं. Who knew it actually worked? That song is meant to guide the souls of the dead. अच्छा, ट्रैवलर का Mitya, मेमोरीज. that must mean that you... Huh. No kidding. Huh? Seemed like I guessed right then. काश योरिची भाई तुम This is बोल what I've देते been कि so वो जिंदा हो desperate गई. to tell you मैं about. मजा ही ले लेता. When I first अलग stepped out मजा of the आता theater, मुझे. I was still quite lucid. 50-60 My में memory मीडियम of it खेल is still रहा pretty था, intact. 30-50 में I हाईएस्ट remember पे the खेल रहा हूँ. outside world being completely different than what I'd expected. It was like this was a world where only the snowstorm existed. There wasn't a trace of any humans Lightning or effect, buildings shadow ever fog having is been there. only existing I don't PC. know how else हाँ, to describe it, वही बोल रहा था. except to say PC that ग्राफिक्स अगर it just एक्सपीरियंस करना है तो didn't seem क्लाउड like पे ही the कर real सकते हो. world. And as for the Requiem, मैं if I लैपटॉप पर was खेलता guided हूँ और here by मुझे बहुत Vodinitsa's डिफरेंस song, फील होता है it आपकी can स्ट्रीम only में. mean मेरे that I was हाँ भाई already होगा, dead. ऑफकोर्स होगा. And this is my soul, not my body. वैसे भी But I मैं didn't ग्राफिक्स तो experience a clear कम करके moment of खेलता हूँ. death while I was out there. एंड Nor वैसे do भी I feel स्ट्रीम any पे different जाता है now तो than before I walked into रेजोल्यूशन the और कम हो snowstorm. जाता है. You don't seem any different to me either. In fact, this is something I've been wondering about for a while now. If souls aren't physical, both Shram and Patashka were clearly deceased, and yet their souls didn't look or feel like ghosts at all. They were visible, tangible. कुछ होने वाला है जैसे No different आई than थिंक you मजा or आएगा. me. This raises a truly terrible thought. इन Is करंट that really what इन Mitya करंट is चला suggesting? रिएक्शन में F2P कैरेक्टर कौन है टॉप टियर पे? क्रायो ट्रैवलर मिजुकी. Mitya said the outside is a world where only the snowstorm exists. Dreams can't explain everything. Mitya's soul was summoned back by the Requiem, confirming that he is indeed already dead. And yet, he looks PCB no 0 different FPS from drop. us. Of course. If even the long deceased like Mr. Shram can blend in with us undetected, PC पे तो then तुम maybe 400 we've all FPS पे been खेल dead. सकते हो. सब टपक गए. मैं ट्रैवलर भी टपक गया. अच्छा ट्रैवलर मर चुका है. Yes. I think that ये आफ्टर लाइफ this is आफ्टर लाइफ probably एक्सपीरियंस the कर रहा है ये. afterlife. What did you say? वेट इसने सच में आफ्टर लाइफ बड़ा वर्ड बोल दिया. You heard me. We died in the theater. All of us did. But due to an obstruction in the theater's ley lines, our souls are trapped here, while an endless, infinite snowstorm rages outside. It's ironic, अभी really. रूलर ऑफ डेथ All रोनोवा that time, के we were working so बारे में hard to पता figure लगेगा. out who ध्यान the दो. deceased among us were, when अच्छा. the truth was, we were all deceased. The only difference being some of us died more recently than 400 others. FPS के चक्कर Do में you remember आईडी that कौन note, करेगा? Death is near? Seems like we misunderstood what it meant after all. Death was nearer than we wanted to think all along. The note simply meant that all of अच्छा us रोनोवा were मारी थी already सबको. dead.
So all our attempts to survive, our search for the deceased, it was all for nothing? Hard to say. At the very least, we hope 2 lost souls find clarity and go सब to where they मरेंगे. belong. The presence of those 2 is probably what caused our souls to be drawn in by the ley lines. In which case, the deaths we've awoken तो to अभी ये over the 5 past few भूत है days ये. were just souls returning to the ley lines for good. क्या बेकार If बॉस what है you're बुड्ढा. अरे saying आने is दो ना यार. true, अभी से चिंता क्यों कर doesn't रहे हो? that make us the पहले तुम lost अपना souls now? एक करंट वाला बॉस को मारो. Huh, no wonder. This afternoon, when I was moving Vodyanitsa's body, I noticed that the other bodies in the room hadn't decayed one bit after all these days. That's further proof that those aren't physical bodies at अच्छा all, लेकिन अलग but merely our लोकल shells here in the लेजेंड का ही afterlife. बात करो. वो भी नहीं मार पा रहे. Am I कोई ना यार. really dead? This doesn't feel real to me at all. No, that's impossible. This cannot be how it all I ended. still find it hard to believe that all of us are dead. How रोनोवर exactly मेरी did है. we पहले die क्लियर in the कर real देता है. world? ओके कोई None ना. of us have any memories of dying, right? Not even knowing how we died is preposterous. Good grief. Surely there has to be some reason. Exactly. Unknown God It's को मैं hard to उठा rest in लूंगा. peace when you don't even know how you died. It gave me lots to think about as I strode out into the snowstorm. I racked my brains trying to 100% remember the नहीं, cause of my because death, उनका the बॉडी exact से moment I अभी died, कनेक्टेड है. the root of all of अच्छा, this, right वायरलेस up कनेक्शन until इसके my पास है. consciousness वाईफाई faded. अच्छा होगा इनके पास. Wait, बाकी का आई थिंक 3G था इसलिए hold कट on. हो गया. ये लोग Right 5G before I वाईफाई lost पे है. consciousness, हाफ I डेट think I समझ लो saw बिकॉज something. जस्ट हाँ क्योंकि इनके पास 5G इंटरनेट था. I can't remember. And I think I lost my notebook and pen. वेलकम लेगो भाई. वेलकम भाई. फिल्म स्टार पर फेसबुक है. क्या Blood on बात your लगो भाई. fingers? वाओ क्या बात. Huh? अभी You're देखो right. मैं कष्ट कर रहा हूँ There's वहाँ blood पे. on the fingertips of my right ये 5 hand. भूत है यहाँ पे. Looks like it's already dried. When did that happen? What the? ठीक ऐसे ही टैटू में लगाता था आज से सालों पहले. वो 1 रुपए वाले च्युइंगम लेके खाने के बाद. I guess this was what I saw. I must have desperately drawn it in my own blood. सनी Right before योरीजी losing को पे consciousness. करो. बेचारा कब से What's कुछ wrong? समझा रहा है. Do you recognize the symbol? धन्यवाद योरीजी भाई. It's Renova, बात तो है. the ruler of death. आपने अभी तक Alusha, नहीं किया. Do you still remember that Snezhnayan देखो folktale लेगो you में told हर me दिन about? आता हूँ मैं कष्ट करने के It लिए. was about the कोई ना Grim कोई Reaper. स्टीजियन कोई ना कोई एबिस When someone's करवाने about के लिए to पकड़ा die, देता है और ये he होता नहीं. appears as an incarnation आज of someone familiar हो रहा है ये to क्वेस्ट. guide- पता and नहीं as soon कैसे. as you recognize his face, लोग your स्किप life भी नहीं करने is दे रहे मुझे. over. I heard a similar tale when I was little. You think the Grim Reaper in this story refers to the ruler of रोनोवा ने death you कनेक्शन mentioned? कट कर दिया. That's हाँ. right. In which case, death is near could also mean that the Grim Reaper is here disguised in a familiar form. Death, कंडक्टर deceased, निकाल दिया उसने. and the Grim Reaper? फ्यूज कंडक्टर So it's निकाल a दिया. triple entendre. When I first saw this note, I thought it contradicted the investigation report. But now it seems like that was the whole intention. So the Grim Reaper deliberately misled us. Then we started suspecting each other and searched for the deceased while they hid in plain sight. By that logic, the one person most likely to be the Grim Reaper incarnate is... Identifying the Grim Reaper is a... हैं. no doubt about it. भूत. It's Alosha. Looking back at how everyone has acted over the past few days, Alosha is most likely the Grim Reaper lurking among us. ट्रैवलर ने 120 Is वाट it you, Alosha? से चार्ज You were करने आ the गया. first to discover the investigation report, and you had plenty of time to slip the note inside to mislead us. So? Surely you can't suspect me based on that alone. What if someone else found the investigation report first, slipped the note inside, and then put it back without telling anyone? There's no denying it.
the note could easily have been slipped in much earlier than it फिर was मैंने discovered. गेंशिन का एक और That's not थ्योरी all. बनाया है, I've लाइक also यू नो, noticed that although on the पता नहीं surface, वो अच्छा लगेगा Valera, कि नहीं तुम लोगों Nithya, को। and sometimes I तो were the ones taking सबको charge पता of the है कि situation. गेम के Looking स्टार्टिंग में back अननोन गॉड now, आती है, even though you didn't say एंड much, you were always subtly एज ए guiding everyone from the एथर sidelines. चूज करने What के do you बाद, mean? लाइक You were the one who emphasized उस how हिसाब से बोल dangerous रहा it हूँ। was outside तो and लूमिन insisted को we all उठा के stay लेके here. चली गई, It was तो also you who ट्रैवलर को बहुत suggested that we सदमा all लगा, sleep एंड in the ट्रैवलर same place. कोमा में चला गया, And earlier एंड today, you tried ये to convince सब Patashka अपना to stay. यू नो I दिमागी don't खेल है understand ट्रैवलर why, का, सब but it was out of कोमा में character. बैठ के ये सब सोच रहा So, होगा, you didn't understand my intentions, and now you're assuming एंड the वहाँ पे worst. अननोन गॉड Seems एंड pretty लूमिन unreasonable मिलके if you इश्क ask लड़ा me. रहे हैं। He still won't admit it. Fine. Let's see how he responds to the most damning evidence of all. The अभी भी biggest कोमा question में है I ये। have right now is, if the Grim Reaper is impersonating Alosha, मत then कर where's लाडले, the real मत कर। Alosha? अच्छा When did नेशन they पे तुम्हें switch? तो पता नहीं, आई थिंक मैंने ना एक और लोड बनाया था कि क्या बोलते हैं उसे, the first time we spent in the theater, we discovered the investigation report when Mithya returned from. That's right. This was the moment. At least Archon Quest तो मैक्स ग्राफिक्स में खेलता मस्त Alosha was एक्सपीरियंस switched to होता। the ruler of death while everyone's guard was still down. वैसे कटसीन हमेशा हाई क्वालिटी में ही दिखाएगा, तुम कितनी When भी all this कम began, या ज्यादा right ग्राफिक्स में after the खेलो। performance ended and the snowstorm began to pick up, no one suspected anything unusual. We just assumed we were snowed in. It wasn't आई until we थिंक गेम discovered the के bodies स्टार्ट the morning में after अननोन that गॉड we आती है realized something out of the और ordinary was going फाइट हुआ on. था, वो आई It's clear थिंक now एक that the ड्रीम लूप oddities होगा, actually started earlier सेम than एज that. नोवा, When बिकॉज Demoth walked बाद into में the ट्रैवलर snowstorm बताया था कि and वो never came back. स्पेसशिप से ट्रैवल किया था। So Mr. Demov was the first victim, not Sobolova and Torgov. अरे वो And if we सब कोमा pinpoint में that है moment as the ट्रैवलर, वो beginning of this कुछ incident, स्पेसशिप नहीं था उसके then पास, one thing becomes वो clear. ट्रैवलर एंड Alosha, लूमिन you were तैवात में the रहते only थे, person who walked ठीक into है, the snowstorm उनका and छोटा सा came घर back था, without the help of Vodyanitsa's एंड Requiem. More precisely, Alosha never came back at all. अननोन गॉड एक The one who came back was the Grim Reaper. डिसेंडेंट थी अननोन गॉड, तो आई थी, उसको लूमिन पसंद आ गई, Since you've backed me into a corner, I suppose there's no point in keeping up the act ये anymore. एलियोशा लड़की है, Alosha? मेरेकल। I am no such tired cliche. तो मतलब मेरे पास जो एलियोशा है वो भी रोनो हुआ Address me है, as the ruler of death. साइकिल में आया था। Before being wiped out for good, you identified the two deceased and even sensed my presence. गॉड लेस्बियन थी, लेस्बियन नहीं, वो बाइसेक्सुअल था एक्चुअली, Far beyond what I expected. क्योंकि अगर तुम लोगों ने लूमिन चूज किया होगा तो वो एथर को भी लेके जाता है ना, तो उस टाइम पे Your initial conclusion was इसीलिए correct. Due to उसको the दोनों ही चलते existence थे। of the two deceased, the ley lines yearned to reclaim those long lost souls. दोनों में एलियोशा के बॉडी में कंट्रोल कर लिया था। अच्छा, This required no intervention from me. Though of course, ferrying souls is indeed my authority. Here, take a look. ओह बाप रे, यार ये तो प्रॉपर थैनोस स्नैप था, 50% लोग गायब हो गए, यहाँ पे मर गए, 4 में से 2। What are you doing? That takes care of today's too. Don't get so worked up. You are already dead. तो And your souls must return प्रोनोवा to the इक्वल टू ley थैनोस। lines. I know we're already dead. You murdered us. इस ध्यान दे कर तो रहा हूँ क्वेस्ट, क्या यार, Murdered? शॉर्टर रिले में No. 600 का स्कोर नहीं हो Murder रहा। is when mortals usurp my authority. Death is my jurisdiction. If I require एमसीयू someone to कॉपीराइट die, मारेगा, क्या I need पता, not resort to such क्या पता laborious ये methods as एमसीयू का ही murder. गेम है, who knows,
कि You simply met the criteria to हॉरवर्स trigger का my राइट curse of death. एमसीयू ही ओन करता हो, who knows, डिज्नी के पास हो, about the curse of बट कभी immortality. पब्लिक So नहीं किया there's ये बातें. another death-related curse too? You cursed us? डॉक्टर डूम, हाँ, When? And why would you do such a thing? वो तुम So लोगों ने वो often humans pray to डॉक्टर me, डूम का वो वीडियो नहीं begging to देखा know था when कि their उसको death will एक come ऊपर से टावर से and what किसी ने फेंक form के it मारा will था उसको, take. देन नीचे आके गिरा But था. few people ask वो why. एक्चुअली If you must have an answer, ट्रैवलर ने ही लात know मारी थी that उसको. death comes simply because one's time has come. So you're not gonna tell us the truth? Hold your tongue. By all rights, you shouldn't even be allowed to speak with me. Those angels from the past are to blame for the reckless renovation of the मैं ley सिर्फ lines मत here. फर्क. It's made my work on this occasion infuriatingly complicated. Work? So trapping us एंड here, बाय द वे making डॉक्टर us watch डूम our के एलिमेंट friends die, डेंड्रो है, ठीक है. that's just another day of work for you? You clearly have a lot of questions. Fine. As a reward for your remarkable accomplishments over the past few days, I shall answer a few of your inquiries, कैप्टन अमेरिका इलेक्ट्रो provided करेक्टर. they aren't too unreasonable. After the physical body dies, the soul must return to the ley lines for that person's death to be considered complete. My work encompasses the entire process of death, including, naturally, the और guiding भी of इलेक्ट्रो. souls into the ley lines, with which you are now so familiar. You must also be rather familiar with Natlan's Night Kingdom, I presume? It was I who supported the creation of the Night Kingdom. It provided a convenient means of guiding the souls of Natlan. Here, too, the ley lines connected to the theater underwent some modifications. आयरन में पायरो The नहीं है, डॉक्टर angels स्ट्रेंज hoped पायरो to है, make them पायरो. capable of accommodating the souls उसका of मैजिक का some कलर देखना, special मोस्टली creations. येलो रेड ऐसा ही होता है. But this actually hindered their ability to accept ordinary souls to some degree. This effect manifested लामा itself डॉक्टर after डूम you की died बेटी. from ओह the माय curse in the गॉड. theater, leaving you stranded in the afterlife, unable to achieve a complete death. But if souls who die from the curse of death fail And to Gamora return उसकी to the ley बहन. lines within a short window of time, they will miss their chance for good. हल्क भी डेंड्रो है. हाँ यार, डेंड्रो They तो will बहुत remain forever suspended between life ज़्यादा and death, यूज हो रहा है no उसमें. longer subject to the authorities of either. सारे के So सारे if you डेंड्रो don't कैरेक्टर है क्या resolve this मार्वल matter में? soon, and see all our Groot. souls return to the ley lines before long, we'll escape your control. ग्रूट डेंड्रो आर्कॉन है. This must be what Renova was worried might happen, and the reason she got involved to begin with. But if you वो have the नहीं था authority to एक्चुअली, guide जो souls, why didn't you just show क्वेस्ट में yourself जिस and पेड़ get को over जलाया with था ना, it? वो ग्रूट ही था. Why hide among us in the form of a Losha? You seek to understand the mind of a god. Very well. क्या I'll पता tell नहीं you. था सबको कंट्रोल कर रही है. This is a theater, and I decided I wanted to watch a show about death. That's why I encouraged you to take the events to the stage. I found myself getting quite immersed. I suppose the entertainment you provided makes up for all the trouble you've caused me by being so defiant in the face of death. There. Are you happy with my answer? Can't say I am. Really? But it fits the stereotypes you humans have about gods. Just moments ago, you were complaining about how infuriatingly work is work. I get it. There are times when it's a huge pain, but you just एंड have ये to get रोनोवा it क्या done. पता Right. नो That's a वो rather unique perspective for a human. You are in fact correct. There is a स्कारलेट pain विच point का in this case. Due to the obstruction in the वेरिएंट हो. theater's ley lines, वांडा वांडा का there वेरिएंट is हो. a hard limit on the number of souls they can receive each day, making it impossible for me to ferry all your souls at डिस्टर्ब मत कर. once. अरे तुमने तो कर लिया Revealing क्वेस्ट my ना, मुझे मजे identity करना too थे यार, soon would जैसे भी inevitably हो. have led to futile resistance, रोनोवा भी माल. and there was a risk that any souls who chose to run would disappear. Then there was the issue of the मजा two आएगा. lost ओके. souls you called the deceased. The way you resolved that quandary was all part of my design. That's what I don't understand. If all of us were souls of the dead, what made their presence among us special? For centuries, they have refused to return to the ley lines, exploiting the issues created by the angel civilization to resist being drawn in.
Centuries of obsession accumulated during this process. You may think of this obsession as the resentment of the dead, and in this quantity, it was a bomb that could have detonated at any moment. It reached the point where I could not afford to leave it unchecked. But the only way to fix it was to help them acknowledge their own deaths, make peace with their regrets, and willingly walk into the snowstorm. Only then, with my guidance, could they finally return to the ley lines. Otherwise, you would not like to know what the consequences would have been. I vaguely remember seeing Batashka, but in the most terrifying form. Was that in a dream? Is that what would have become of her if she hadn't returned to the ley lines? I see your dreams brought you many revelations. So you see, death in fact grants wisdom to mortals. Souls connect to all things in the world and see the chain of cause and effect between them. It's nothing unusual. Anyway, giving psychological counseling to नहीं मैं lost स्टोरी मैं souls तो is एक्चुअली not my लाइक strong कुछ suit. वीडियो ढूंढ रहा था यूट्यूब That पे. is more of an angel's role. It was something I could not resolve directly using my authority. देख रहा था कौन-कौन स्ट्रीम कर So रहा I है. decided it was easier to leave the bomb defusal to you. Meanwhile, of course, their presence caused the souls of other members of your party इसके to बाद return कर to कर the ley टाइम lines कम each करने में night. हेल्प कर देगा. From where I stand, नहीं तुम्हारा that was टाइम ऑलरेडी killing two बहुत कम हो birds with गया है one तो stone. उसमें मैं और As कुछ मदद both नहीं कर सकता. issues slowly resolved one another without me having to lift a finger. All I had to do was stay close by and keep the situation under control. Then use my authority to wrap things up at the end. And, of course, while I was at it, I thoroughly enjoyed By the way ये watching चीज this देख रहे हो drama, स्लेयर dealing थोड़ी with देर पहले death खुद from a बोल रहा mortal था perspective, क्वेस्ट play के out on टाइम the stage. चैट मत पढ़ो. Sounds like you had it all जब figured बात out, खुद पे आ Grim गई Reaper. I just देखो did the math. You said there's a hard limit to the number of souls the ley lines here can receive each day. It's 2, isn't it? That much is obvious, even to a fool. It's time विद्या to review फ्यूचर में this फुट one इलेक्ट्रो fair. शील्ड If the कैरेक्टर ley होगा. lines can only take in 2 people per day, I need to go over the deaths from these past few क्वेस्ट में days कोलोमिन again. आने वाली है. Looking back now, none of us had the faintest idea at the time. तो यूट्यूब देख रहा है तो हाँ हाँ From the moment that staff member named Dimov walked into the snowstorm, the incident had already begun. Alosha was the second to walk into the snowstorm after Dimov to invest. During this process, the ruler of death assumed his identity, making him. During our first night in the theater, everyone was caught up in the novelty of it all. No one could have expected there would be victims the very next morning. Despite all the confusion, and with the help of hindsight, we finally began to realize that something was amiss with the snowstorm. फर्स्ट कौन मरा था? नो आइडिया. No. ये तो एक एक करके ऐसे. ओह नाइस गेस. No. The ley lines devoured toward. Odette and I spoke a lot that night. 3 people were on watch, but in the morning, we discovered that someone had fallen victim all the same. Damn. The
deaths of Coolish and Ramon तुम्हारा caused everyone to stop मावी का टॉप suspecting 5% on overload build भाई. unexplainable Later, we discovered that there seemed to be an extra person among us, and subsequently discovered the existence of the deceased. Mr. Schramm, really? No. He thought it was all over. Continent Sumeru, all in one quest. A lot happened to The fact that there was more than one deceased seemed to bring us back to square one. Odette revealed some information she had been keeping to herself. No. As it happened, the girl I thought was child's sister Tonya. अरे इतना अच्छा टाइम तो है. ना कम करोगे. Vodyanitsa was swallowed by the ley lines in her sleep. Vodyanitsa को खा गया. बोल रहा है. Come to think of it, and Renova, looking back. No one could have expected anyone who walked into the snowstorm to return. But just after nightfall, Mitya returned, bringing crucial information with him. Various truths began to surface, including that all of us were already dead, and that the ruler of death was here among us. Then, after revealing her true form, Renova callously claimed 2 souls. No, let me go. वैसे मैंने भी किया थोड़ा टाइम कम. अच्छा. And in the days since, now, only Mitya and I remain. And the true culprit. That covers कोई everything. क्वेस्ट विदाउट स्किप कभी किया है? Clear now. Your work isn't finished here yet, is it? The traveler and I are still standing here, safe and sound. The water in तब स्ट्रीम नहीं करता था, I think. things off a little, but it is of no consequence. The ley lines have already anchored your soul, and the first ray of light tomorrow morning will take you back. So the reunion in the night that Vodyanitsa mentioned, I suppose that was never meant to be a permanent reunion. That just leaves you, traveler. My power and your soul is firmly anchored to your body Chat by your will. coach. For a descender like करेगा you, ब्रो हो who is जाएगा. not bound ना by मुझे नहीं Tibet's करना. rules, ऑलरेडी अच्छा your टाइम को मैं death और can नहीं कम only be करूँगा. brought through the most violent of means, such as directly destroying either your body or soul. I have no interest in involving myself with descenders. For now. Although, मुझे नहीं था जरूरी this है may मींस change if अभी Asmodee मछली remains क्या missing. उसका Or you मच्छी भात insist बन on सकता है. interfering with our हाँ क्यों affairs. नहीं. One last question then. फुल पोटेंशियल देखना है इसका All का. our struggles and sacrifices here. फुल पोटेंशियल देखना है They तो were क्राउन करो meaningless from the सबको. very beginning, weren't they? Death abides no reason. Besides, what you call sacrifice is, to me, it is nothing more than a self-indulgent charade in the face of death. Mere Grim Reaper, you really know how to get on my nerves. I'm not here to ingratiate myself with you. कितना टाइम है I वैसे kill मतलब? merely because your deaths are necessary. Oh, you've made that quite clear. But humans don't take well to being scorned. Not even by the gods. ए कट्सी. मोर एन हैंड 900 के. देखो तुमने कहा फुल पोटेंशियल तो हमेशा क्राउन पे ही मिलेगा.
This is futile. You must know that you are powerless against me in my own domain. I suggest that you save your strength. For what? Maybe we can't change anything. But if nothing else, we can at least teach you to have some respect for the dead. Audacious. स्को का रीरन हो रहा है, अभी तो बताया नहीं गया। आई नो मेरा परफेक्ट नहीं हुआ। अरे अच्छा टाइम है यार तुम्हारा, तो 1-2 सेकंड कम करने के लिए क्या है यार। और वैसे ही मैं किसी का स्टीजियन का टाइम कम नहीं करता। लीक्स आ गया है। इतना हेल्प करता हूँ कुछ बताने में, थोड़ा पेमेंट तो मेरा भी बनता है। हाँ हाँ एक दो सेकंड, बट मैं क्यों कम करूँ तुम्हारा? मुझे क्या मिलेगा तुम्हारा टाइम कम करवा के? How are you holding up, Odette? What happened to me? How much do you remember? What do you mean? Has Odette already forgotten? पेमेंट उस वो तो तुमने नेफर के लिए किया था। Oh, नेफर वाला बॉस खेलने के लिए। I guess I spaced out. Don't you remember anything? Yeah, I remember now, comrade. Looks like we guessed right. अभी क्वेस्ट स्टार्ट होगा। अब तक मैं क्या कर रहा था? Palace? For some reason, everyone killed by the ruler of death eventually came back to life. अभी मिल्क बॉईल कर रहा हूँ। कर रहा था, गलती से उसमें लेमन गिर गया। अब ऐसा क्या करूँ? जैसे मारना पड़ेगा। अरे बोलो कि मैं तो चीज बना रहा था घर में। You don't? बोल दो, अरे पनीर बना रहा था, पनीर। Okay, I guess that makes sense. I carved this into my रात hand को in the पनीर की सब्जी afterlife, so it's not visible मेरे in the तरफ से। physical world. Does that mean I carved this दूध खड़ा था, symbol हाँ in ये my भी बोल soul? सकते हो। देन दुकानदार के लेक के पास जाएंगे। Still, at least I get to remember what happened. I suppose it's a blessing in disguise. What about you? कच्चा खा जाओ उस दूध को। The ruler of death mentioned that you're a descender. Is that why you can remember? कॉफी बना के खा जाओ, कोल्ड कॉफी। Explanation would get complicated very quickly, but that's essentially it. Well then, now that it's all over, let's figure out what we've learned. अरे ब्रो ना ना The ना first ना। thing I notice is that everything here is precisely as we left it, right before our deaths. This confirms that time passes differently in the afterlife than in the real world. They say that right before death, मेंबरशिप ले लो प्लेयर भाई, तो मैं थोड़ा सोचूंगा। flashes before your eyes. That must be how you know you have one foot in the afterlife by that point. Anyway, clearly the few days we spend in the afterlife probably only amounted to a few short minutes in the real world. This also aligns with previous reports of ₹29 तो महीनों पहले था मेंबरशिप का प्राइस, अभी 59। Now it seems likely that those were all brief deaths caused by the Grim Reaper's so-called curse of death. क्या आइडिया बता रहे हो? To those unaware of the truth,
dying and coming back to पर वो life दूध must be गेस्ट के similar लिए to a था, short चाय bout of बनाने के लिए catatonia. था। अरे काम करो ना, एक दूसरा दूध का पैकेट खरीद के लेके आ जाओ और क्या। This leaves me with a couple big questions. What are the conditions that trigger this so-called curse of death? And why? यार करते ना ऐसे नहीं If चलता। nothing else, I इमोशनल think it shows that killing us wasn't her नहीं ultimate नहीं goal. होता। मैं We still don't know her true reasons for subjecting us to टीजन death. Right. बोलने के लिए भी पैसे लगता है, This पता है time व्यूअर only को। got complicated because of the situation with the theater's ley lines. That's why she had to approach it differently. If the previous... Come to think of it, wasn't I about to note something down before I died? I can't remember what it was, बहुत but उसूल है मेरा, अभी I think it फ्री was में कर something देंगे। related to my research project. टीजन नहीं होगा फ्री में। Sorry, traveler. I'll catch up with you again later. Right now, I have to make a trip back to the Armory Palace. Sir, if I may, no one of your description has ever shown up in my investigations into Mr. Mitia's friends. Yet, you two seem यार मुझे very तब से familiar with each other. एक Could you perhaps tell me where he फुटबॉल का was in मैच such a खेलना था rush to टोबी के get साथ, to? And हो ही I नहीं can पा रहा। explain. ये क्वेस्ट बाहर में जाए। 6:45 बज गए। So, Chuganov really... So, you said I promised to take... Agreed. ओ बाहर आ गया। अब किसी और दिन करेंगे बाकी का क्वेस्ट। क्या चीज है? बस 30 मिनट का क्वेस्ट बाकी है। बढ़िया टाइमिंग। लास्ट क्वेस्ट बाकी है 50 मिनट का। सोचो 6:45 बजे अभी। मुझे अभी से 1 घंटा पहले स्ट्रीम बंद कर देना चाहिए था। अरे अरे अरे, पैसे ही पैसे। बाकी क्वेस्ट कर। कहाँ कम हो सकता है? देखो अब तो कम अगर हो सकता है तो एक ही ऑप्शन है, अगर जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम 1-2 सेकंड कहीं पे वेस्ट हो रहा हो नो, वही। इनका काम खत्म आज का। इनका तो आज मैंने कंटेंट बना लिया था। एक मैच खेलना है टोबी, बोलो। वेस्ट का विदाउट ऑडिट कितना डीपीएस लॉस होगा? नो आइडिया, बिल्कुल नो आइडिया। इसको स्कर खरीदे, कोई तो बोल रहा था कि कंफर्म हो चुका है।
6.7%. वेलकम ड्रीमर, वेलकम निकी। कैसे हो? मैं बढ़िया। ई फुटबॉल कब से खेलता? तो पहले था बहुत, अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले फिर से स्टार्ट किया। टीम दिखाओ। ये है फिलहाल। आज होयो कि संसार से विश्राम लिए हो गया? नहीं, खेला था थोड़ी देर पहले, जस्ट बंद किया। सिर्फ फ्रेंड कैसे बनाते हैं किसी को, लाइक नो। सारे ऊपर खेलते हैं ऐसे फ्रेंडली मैच में? क्या बात कर रहे हैं? ये देखो मेरा टीम और इसका टीम। 105, 102, 103, 103 का गोलकीपर, 102 ये इसका टीम और मेरा टीम, ठीक है। कंपैरिजन देखो। देख रहे हो? और ये देखो 84 का सेंट्रल बैग है मेरे पास। इसको अगर नीचे कर दूं। अच्छा, मैंने रखा, ऐसा होता है? ओह। पहले वाले अकाउंट का क्या हुआ? उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि पहला वाला अकाउंट 2021-22 पे खेलता था। वो सारे प्लेयर एक्सपायर हो गए अकाउंट से। अकाउंट एक्सपायर हो गया, वो एग्जिस्ट नहीं करता अभी। Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too.
Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So straight into the action. Oof. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, the modern version मेरा of that प्लेयर is के a लिए lot more गांड लगा के fluid सेव कर and देंगे. flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed, but it still works, it's still valid, and I think we're going to see it be successful here. And the pass is intercepted. अरे Now, can they get him away? Knocks it into space. Picked out brilliantly. अरे Barcelona have got it back and they'll have another go. Looking to play him in. It is a corner. And we have our very first corner. It's really well cleared. अरे And now a sudden chance to counter. First quarter of an hour gone. Now that's well seen too. And he's heaved it away. And Dijk cuts out the pass. And here's Haaland. Still goalless at the moment. Rice. Now it's Kane. Looking for options for movement. That has ended up in no man's land. De Bruyne. That's alert and sharp and very well played. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening मेरे प्लेयर को मारता है. When you think about it, most of his ilk will put themselves before the team. But Raul is different and has a greater appreciation for all that and likely to put others in before himself. Marquinhos has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Threads one in. Oh, that's clever. अरे ये क्या हो रहा है? That's a dangerous ball. And now they can clear their lines. Yeah, and he read it before anyone could follow up. Stood up well to him there. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. He's found a way through. अरे कहाँ पास देता है ये? Triol gets it away. Can he get on the end of this? That has not gone well. Rice, and it's Gavi. That pass isn't the best. Now it's Haaland. Tries to pass it through, and it's been played through. Oh, terrible pass. Kovacic! It's off target and by quite a way. Kovacic clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Neither side giving way, it has been tight. Nouri bops him off it and wins back the ball. Doué. Rice. Pass is coming off in quick succession here. Nicely weighted ball. De Bruyne. Koundé. Gavi. He's a sharp little judge. Cool. Nice. Surprise, surprise. Look who turns up to give his side the ultimate lift before the break. Now we can look forward to a whole different game in this second half. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done.
That's expertly finished, and he's done that so often. Manchester United have broken through. It's 1-0. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time. Shot a goal! अरे It's a goal! And once more, we are all square. You score, we score. Well done. And that is all they have time for. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So it's one each. How are you seeing it, Jim? Well, it's been an intriguing watch. A really nice contrast of styles that seem to suit both teams pretty well. Who's ultimately going to win it? It's anyone's guess still. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Substitution for Manchester United, number 17, Harry Kane. So it's back to business. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Number 9, Enzo Fernandez. Well, that looks a decent अरे goal. Oh, super find. It's roll! That is a super hit, but it was always just off target. ये सुआरेज वाला कार्ड आई थिंक थोड़ा लेना पड़ेगा, बहुत भाग रहा है. Well, that is one way to stop him. Manchester United come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up... De Bruyne! Goal! Barcelona! And the comeback is complete. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Barcelona with the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Nuri. Oh, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Kovacic. Oh, that's wonderful alertness. De Jong. Gavi. And that is a little अरे undercut. एक बॉल नहीं ले पाता. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Tries a shot! ये शॉट इसे मारा कैसे? Not what he had in mind. Barcelona certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. No way through. Manchester United perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And he's chance for a shot! Nice goal! एक और सब्स्टिट्यूट लगा ही देता हूँ. नो, किसको लगाए, किसको लगाए, किसको लगाए. इसका टीम देखो जरा क्या चेंजेस किया इसने. ये कैसे लाइक ऐसे हिला हुआ टीम है ये. Substitution for Barcelona, number 11, Erling Well, the Haaland. two coaches are signalling changes here, both at the same time. Manchester United drag themselves back again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Neymar.
Nunez. And that was very necessary. And it's Kovacic. And the shots! बच गया And they've got rid. De Jong to Messi. Oh, this looks sharp. Pool. He has slightly undercooked that one. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Marquinhos kept his eye on it, and he's there. Well, he got rid because he was under pressure. Rice. Good chance here! It is a very, very good save. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Good take, and is he in? And he's there to retrieve it. That's rather hopeful. And that's a एक तो खतरनाक शॉट मारना पड़ेगा Looking, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Manchester United have their second corner now. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Manchester United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. That's a shade optimistic. Lovely pass, but can he get there? And it's been played through. Nunez gets flagged offside. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Bang! Looking for a runner. Now this could be a chance. Well, that's बस beautifully अरे routed. ये This तो is गया Neymar. Can he finish? ये मेरे साथ अन्याय हुआ है So is that it? Is this the moment they stole it? One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch. अरे And he looked every bit the अन्याय हो रहा है मेरे assured साथ Mbappe is offering a right smile there. Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments, and this is a rather big one, and it all depends on the service. मेरे साथ अन्याय हुआ है Manchester United did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made even more painful by the way it came to pass. So there it is. What struck you most about that? Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that एक और was खेलोगे हाँ constantly on the edge as both sides went full क्यों pelt नहीं trying to
अरे बैक कर दिया मैंने। अरे मेरा गेम ही कैंसिल हो गया। ये हॉलैंड वाला कार्ड मुझे दे दो यार। कितने सारे सीएफ रखा है अपनी टीम में? 1 2 3 4 5। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Just listen to that noise. This place is... Decent chance! Off the post! अरे अरे बॉल नहीं है अभी। Well, Peter, we're about to watch a terrific defender. अरे ये रूनी पीछे क्यों रह गया? He leads भागा by ही नहीं। example and continually organised. His appetite and attitude to the game is absolutely fabulous. There's an awful lot to enjoy about his play. And he exudes charisma. He does, and I just love his leadership. Do it. There's a sharp little ball here. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not ये मेरे making प्लेयर any है, early मेरे जैसे mistakes. बिल्कुल नहीं खेलते जो मैं We're seeing चाहता हूँ। some conservatism here. Dewey. That's an imaginative pass. ओह, ये खतरनाक शॉट देखने को मिलता। Oh, that's superb. Bellingham. Oh, there's a probing ball. Now looking to orchestrate a counter. Oh, no joy this time. Manchester United still without a single shot on target. And he cuts out the supply. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. Can they get him away? Gavi. अरे गलत, उसको पास क्यों दिया यार? उस साइड पे क्यों दिया? ओह, क्या बात! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Manchester United have penetrated for the first time. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And the two sides separated by the game. अरे अरे, इतना पीछे पास नहीं देना होता यार। 1-0 the score. Alexander-Arnold. And it's Alexander-Arnold. अरे? Tries to play it through. And this is Ronaldo. And that's gone loose. And he's got the beating of his man. It's Cristiano Ronaldo! Oh, so close to what would have been a memorable goal. Well, that's a great chance from a really swashbuckling run. His manager will be wanting रेजिंग more of स्पेंड that. कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने स्क्रीनशॉट लिख के रखा है कौन से बॉस मारना है। Rodri. इतने सारे प्लेयर मिलकर अगर एक बॉल ना ले पाए। Nuri. Lovely pass, but can he get there? अरे? Great vision. मेरा पेदरी ऐसा नहीं खेलता। अरे? That is ended up in no man's land.
A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. मेरे प्लेयर पे कुछ तो दिक्कत है. That's really well manoeuvred. And he's cleared it out of harm's way. Gavi अरे bumps him off it and wins सर पे back the लगा के ball. सेव कर रही है लोग. Probing pass. Priol cuts out the pass. And he's only too happy to take that back. Can he get on the end of this? Haaland! क्या गोल था? That is brilliant! Oh, it really is a finish of the highest order. They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. Oh, that is asking for trouble. And he's lost his man here. It's Cristiano Ronaldo! Now, that wasn't a bad hit by any means. Well, at least his thinking was very good, Peter. Chill, man. Probably thought he hit the target, judging by मेरे his साथ reaction. 1v1. हाँ खेलो. This possibly the last play of the half. And he's gone looking for safety. And for the first half, that is that. Nothing to separate the two teams at half. By the way, आयचिन भाई मैं तुम्हें अपना टीम दिखाता हूँ जिससे खेल रहा है उसका टीम दिखाता हूँ ठीक है. All square. Well, Jim, ये है मेरा टीम ठीक है. ये है मेरा ओपोनेंट. Game so far, Peter. Although क्या बोलूँ मैं? I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view ये मेरा हाल है. to entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. काश मेरा आज से 4 साल पुराना अकाउंट अभी मेरे पास होता. So it's back to business. And it's Alexander Arnold. आर्नोल्ड के साथ ही गोल मार देंगे. It's a searching pass. Barcelona have quite a reputation. ये बॉल इसने रिसीव कैसे किया? हो नहीं सकता. ये कुछ हैक लगा रहा है. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get. Hey! Chance! Sensational! ना यार मेरे साथ अन्याय हो रहा है. ये हो ही नहीं सकता. ये उसका प्लेयर ऐसे यू करके जानबूझ के बॉल नहीं ले रहा. हो ही नहीं सकता. The next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Kunde kept aware, and it is reclaimed easily. उसका प्लेयर बीच फील्ड के बीच में एक्रोबैटिक्स दिखा रहा है. Oh, that's fabulous. ये पास क्यों नहीं मिला मुझे? And he's there. Doué, Kovacic does well to get it back. Nicely shaped ball, not the most accurate pass. He's found a way past. Kunde. Oh, that is good. Oh. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Rooney. Just eases him off the ball. Van Dijk midfield पे आके खेल रहा है मेरा. That has snuffed out the danger. And it's Doué. Barcelona needed that. They really needed it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but कौन सा कार्ड मिलेगा? And he has shown him a yellow card. Yellow.
वैंडी को अटैकिंग मिडफील्डर लगा देता हूँ, सारा वही गोल कर देगा। दो ही अच्छे काम नहीं कर रहे, सब चेंज कर दो। मैं तो चाहता हूँ टोबी का कनेक्शन बंद हो जाए और जिता दे मुझे। आईएचएन में अगर खेलने आए तो रेडी हो जाओ, गेम टाइम ऑन करके तो कोड वोड भेज देना। So we have movement on both benches. Can he get it through? Akanji spots it and intercepts. Messi! Yeah. Wonderful Lionel Messi! He's got himself Scam कर रहा है ये। absolute peach. And look what देखो 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 it देखो means देखो। to them. This is a position of genuine strength now. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. And he shoots! Damn! Goal! एक सेलिब्रेशन टाइम नहीं मिला। Interesting. Oh, he did so well to इन hold his दोनों को मुझे team and stay on पहले the side खिलाना of चाहिए each other. था। That was really clever. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And he welcomes it in. Great ball, and he tries a shot! Damn! Oh, how good is he? अरे दो स्ट्राइकर क्या बदल दिया, गेम ही बदल गया मेरा। It's level again. What a match we have! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. There was to be only one outcome. Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. Well, what a game we have on our hands here. Yeah, it's all वैंडी happening को now. स्ट्राइकर There's बना been दूंगा मैं अपना an upping एक of टाइम the पे। attention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Tries one from range. That's a real chance missed. Gavi has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. That looks a good ball through. He's picked his way through. हाँ, स्टंट दिखा रहा है यहाँ I पे। think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. No luck with that dink over the top. And they've got rid. Rice. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Aimed beyond the defence. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. That's just playing it safe and simple. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Knocks it into space. Oh, perfectly measured that. हाँ 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 हाँ। Mbappe. Oh, shooting chance! ये बोलो, ये ठीक था, ये ठीक चीज था। Crazy! So is that it? Is this the moment they stole it? A momentary lapse, mercilessly 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है, 5 मिनट के बाद गोल दिया जा रहा है। ये ठीक था मेरे साथ। Manchester United did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made even more painful by the way it came to pass. स्कैम करके हरा रहा है मेरे को। What struck you most about that? Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. इतने देर तक स्ट्रीम Oh, good. Yeah.
एक ही मैच खेलेंगे, ठीक है? देन बंद कर देंगे स्ट्रीम। मेरे पास तो टीम भी नहीं है कि जो मैं सजाऊं अच्छे से। सारे खराब प्लेयर लिए। धन्यवाद। यहाँ पे भी सब, एक तो ये इसको डालता हूँ, ये पता नहीं क्यों लिया। ये भी थोड़ा सा सेम सेम फॉर्मेशन है। कोई मुझे मेरा 2022 वाला टीम लौटा दो। अरे बाप रे, क्या जर्सी है ये, आग लगा दिया जर्सी। जर्सी पैंट दोनों में आ गए। And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We're up and running then. And he cuts out the एक बात ये वैंडी को फॉरवर्ड पे खिलाना पड़ेगा। Who do you think this turns on, Jim? Yeah. Harry Kane. He's a deadly finisher, Peter, obviously, but One sweeping move executed with deadly अरे efficiency. ये कैसा पास दिया, उतना ऊपर भी पास नहीं देना। अरे मेरे पीछे वाला प्लेयर हट गया, मुझे नहीं मिला बॉल। I doubt very much that this was in the script. Looking for the run. अरे ओ मेरा गोलकीपर। He's quick to get rid. गोल, भागो 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 भागो। Grimaldo. Doué. Rooney. Oh! And that's in. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे भी गोल मार सकता है। to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Pressure, what pressure? He feels none of it. Rooney demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. ओह वैन डिक भाई, मेरे 4 डिफेंडर में 4 वैन डिक लगा दो बस। Starting to look very interesting, this. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And that could set him on his way. ओहो And into the grateful arms of the keeper. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Oh, super ball! Rafinha. Argentina are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, ball's over the top, long diagonals, that's the plan. Gavi. Doué. That's a nicely weighted pass.
Oh, he's done very well to take that back. And Akanji. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. He's found a way through. ये उसके प्लेयर मुझे भी अपनी फॉर्मेशन बदलनी पड़ेगी. With their first corner, the first in the game for either side actually. They want to be quick to recover this. He'll try to keep this alive. And he's managed to get rid. 3 स्ट्राइकर लगा दूंगा. And he's managed to gift it back. And he thumps it clear. अरे बाहर नहीं गया बॉल. De Jong. And it's Gavi. Kane is somewhat off target. Lo Celso. There will be 1 minute at a time. And the pass is intercepted. And we've reached half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Any strong opinions on the first half? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. Manchester United are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Back on the way then. Ended up in no man's land. Van Dijk. वाह क्या पास है भाई. Rice. अरे ओहो उसको नहीं पास देना था, उसको नहीं. Gyökeres. Can he get on the end of this? He's the judge, surely. That's another chance. 2 गोलकीपर चाहिए मुझे. 2 गोलकीपर चाहिए मुझे. उसका फ्यूचर देखना आता था क्या? लाइक उसे पता था कि वहीं पे बॉल आएगा. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about looking. पेद्री को भी पता था क्या मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, बॉल ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरे. Well, this is what we've been waiting for. Oh, given away. He's found. Can he finish? ना भाई मुझे नहीं खेलना ये गेम. नहीं मैंने सुआरेज नहीं दिया था अभी. नहीं खेलना मुझे. एक गोलकीपर ढंग का नहीं है मेरे पास. ये मेरा टीम है नहीं, उसी का टीम है ये. 20 प्लेयर है उसके टीम में. सिर्फ वैंडिक है मेरा और कोई नहीं मेरे पास. He is slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was. अरे रूनी आगे क्यों नहीं जा रहा ये? Pedro Porro. आगे नहीं जाता. And that is out of play. कुछ तो गड़बड़ है उसमें. रूनी गोल पोचर नहीं है मतलब? इसका क्या मतलब हुआ? डीप लाइन फॉरवर्ड है, मॉट मिडफील्ड पे रहता है इसलिए. ये क्या कैरेक्टर ले लिया? That's a risky ball, you've got to say. Manchester United are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Whoa! Through the gears here. Oh, good read. That was well played, well stopped. Tries to play it through. Nicely weighted ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. There's the shot. मेरे प्लेयर इतने हालांकि ऐसे मेरे प्लेयर सामने क्यों नहीं भागते?
अरे अरे Now it's Kane. De Jong. Now it's De Jong. That has not gone well. तुम जो बात कर रहे हो वो गोल पोचर वगैरह करते हैं। हाँ तो तू खेल क्यों रहा है इसको मैं? Kane. Now it's Mbappe. And he was quick to मैं react. पे भी थक गया यार, कितना भागू मैं। Ignoring. हाँ 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 हाँ, उसी को पास दिया मैंने। मैं अपना प्लेयर को पास थोड़ी देता हूँ। इनको देखो, बॉल आ नहीं रहा इन पे। 7 फुट का जंप लगा के पास देंगे। हाँ भाग रूनी। Knocks it into space. नहीं। And that's that. Manchester United cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling, at times unplayable, who simply brushed them off. Your final thoughts, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. कोई ना। पूरा टीम लिया था चालू। वो मेरे साथ गेम वालों ने बोला कि नहीं तुम जीत नहीं सकते। इसका टीम मैच के स्टार्ट पे देख सकते हो, लाइक सारे 100 ऑलमोस्ट 100 के नीचे ही प्लेयर थे उसके। एक या दो ही थे 100 एंड 100 में। ये गोल पोचर का क्या सीन है? प्लेयर डिटेल कहाँ पे देखूं मैं ये? कैसे देखूं मैं वो सब? स्लाइड। पोजीशन ट्रेनिंग, प्लेयर इन्फ्यूजन, प्लेयर रोल। ये एक बना दूं इसको मैं? इसकी पासिंग कितनी है?
गोल पोचर, ये गोल पोच कहाँ पे देखूं मैं ये? एम्बैपे। देखो इससे यहाँ पे लगाता हूँ, इस पे इसको यहाँ पे लगाता हूँ, इसको यहाँ पे लगाता हूँ। ओहो क्या की मैंने। प्लेयर स्टाइल, प्लेयर स्टाइल, प्लेयर स्टाइल कैसे देखूं मैं? छोड़ो, मिलते हैं, आज स्ट्रीम बंद करते, बाय बाय। थोड़ा सीवी पार भी कम करो, वो ज्यादातर मिडफील्ड पे ही रहता है। बाय बाय। थोड़ा सीवी पार भी, ओके बाय बाय।